almost 9:15 हो रहे हैं. I hope to be finished with my presentation hopefully by 10. ठीक है, जैसे आपको इंट्रोड्यूस डॉक्टर शिवजीत करा चुके. मेरा नाम हारून अहमद खान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सर्व कर रहा हूँ. और जैसे कि हम एग्री करते हैं कि सबको ओबी की कोई ना कुछ एक्सपोजर है, ठीक है, तो एनी एक्सपीरियंस शुड हैव अ लर्निंग आउटकम एंड होपफुली दिस वर्कशॉप वुड आल्सो हैव ए लर्निंग आउटकम, जिसको मैंने WLO यहाँ पे लिखा हुआ है. होपफुली विल हैव some kind of outcome which is positive. ठीक है, तो I'm just saying कि जी hopefully we can achieve abilities in A4, C3 and P3. Now I'm not expecting all of you to remember what A4, C3 or P3 stand for in terms of Bloom's taxonomy. लेकिन अगर आपको किसी को याद हो, anybody? A, C और P कुछ याद है? जबरदस्त, great. तो बेसिकली ऑब्वियसली एंड थैंकफुली मैं आपको टेस्ट नहीं करूंगा, सो वी विल नॉट हैव एनी एग्जाम, वी विल नॉट हैव अ क्विज एट द एंड. तो मैं अज्यूम करूंगा, लेकिन मैं आपसे फीडबैक लूंगा एंड लेट्स सी इफ वी गेट सम ऑफ दीज आउटकम्स. ऑब्वियसली साइकोमोटर थोड़े से डिफिकल्ट होंगे टू टेस्ट, वो आपके एचओडी साहब टेस्ट करके हमें कुछ ऐसे बात बताएंगे कि इफ इट्स कमिंग इनटू प्रैक्टिस. बट वील गेट बैक टू व्हाट A4 इज, C3 इज एंड P3 इज. ठीक है, आज मेरा जो टारगेट है, दो इसमें पार्ट्स हैं. एक में ये है कि मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पे बात करूंगा ऑफ obviously the whole idea of OBE, and then we'll talk about applications of OBE, and this will be followed by specific presentation by Dr. Shujil addressing complex engineering problems and the CQI cycle. Now evaluation, आप alhamdulillah सारे teachers हैं. I hope all of you understand what evaluation means and what the value of evaluation is. हम लोग एज फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स को हर वक्त एवेल्यूएट करते हैं. हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं एवेल्यूएट करने के. सर मैं आपको स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब ठीक है, सो यू डोंट हैव टू. और ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं. हमारे पास क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जाम्स हैं. और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग एज एकेडमिशियंस स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटी और एकेडमिक सेटिंग, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई क्वान्टिफाइबल मेजर हो of what the students have gained. ठीक है, obviously we want to have that understanding. Now traditional जो हमारी academics में जो evaluation की जाती है, this is pre-OBE, उसमें बहुत सारी limitations हैं, उसमें बहुत सारी problems हैं, and I'm sure many of you would appreciate them. ठीक है, some of these problems are कि आपको ये नहीं पता लगता कि student जो है उसकी knowledge की depth क्या है, and I'll explain this with examples. ठीक है, आपको ये नहीं पता लगता कि उसकी जो नॉलेज है उसकी नेचर क्या है. यानी कि एक स्टूडेंट है, आप कोर्स पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट करें लेट्स से 2 स्टूडेंट्स एंड दे हैव द सेम ग्रेड. एक के 75 मार्क्स हैं, दूसरे के 75 मार्क्स हैं. ठीक है, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन स्टूडेंट विद द सेम ग्रेड हैज एक्वायर्ड डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स compared to another student with the same grade. So that let's say fine resolution of information is not available in traditional evaluation. ठीक है, obviously, and that translates into your transcript as well. आपको ये भी नहीं पता लगता कि level of competence क्या है, ठीक है, आम evaluation के अंदर. और ये जो information है जो कि बहुत important है stakeholders के लिए, और ये stakeholders जो हैं वो student खुद होता है, हम लोग हैं अपनी feedback और improvement के लिए. उसके अलावा जब job market में हमारे graduates जाते हैं, those people are stakeholders. In the long term, आपके जो parents हैं या incoming students, they are also stakeholders in terms of what kind of deliverables your university is giving. ठीक, तो एक चीज क्लियर है कि हमें एक बेहतर पैराडाइम चाहिए, एक बेहतर पैराडाइम चाहिए ताकि हम ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टूडेंट्स के जो एक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं, जो उन्होंने मल्टीट्यूड ऑफ स्किल सेट्स, आप लोगों की यानी कि एक्सपोजर उनका हुआ, इतनी अच्छी फैकल्टीज के साथ उनका एक्सपोजर होता है, उनसे वो खाली ये नहीं सीखते, फॉर्मूले नहीं सीखते, स्पेसिफिक चीजें एकेडमिक नहीं सीखते, उसके अलावा भी बहुत सारे स्किल सेट सीखते हैं. एंड दीज थिंग्स शुड रिफ्लेक्ट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड दे शुड रिफ्लेक्ट इन क्वांटिफाइबल टर्म्स, एंड दिस इज वेयर OBE कम्स इन. बिकॉज हम खाली ये नहीं चाहते कि हम उन चीजों को किसी न किसी तरीके से मेजर करें, बट वी आल्सो वांट टू डॉक्यूमेंट ऑल दोज गेन्स जो भी स्टूडेंट्स ने गेन किया है. तो
इसलिए और इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. रेफरेंस लेटर का आइडिया है आप सबको होगा, आपके पास यकीनन मेरा ख्याल आपके ग्रेजुएट्स हैं, हैव स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर, आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आप सब गए होंगे अपने अपने प्रोफेसर्स के पास, जब एमएस के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट से अपने फैकल्टी टीचर्स के पास जाके आप मांगते हैं कि जी हमें जो है वो रेफरेंस लेटर दे दें. तो आप में से सर आपका नाम मेरे जन से ठीक है जी, मद्दाह सर. रेफरेंस लेटर में अमूमन किस तरह का कंटेंट होता है अगर आपको याद हो? व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू राइट इन? कोई आपको रेफरेंस लेटर किसी ने दिया हो या आपने किसी के लिए लिखा हो? आप श्योर मिसाल के तौर पे कोई स्पेसिफिक्स अगर हम बात करें, सजाद साहब. Excellent skill set तो चलें, obviously it's a very broad statement, but the point is कि essentially a reference letter is going to talk about skill sets which are not on the transcript. Now if you do that, you can do it, but I can tell you for sure कि जो audience है, यानी कि जिसको आप जमा करा रहे हैं, be it another university, be it another another employer, some employer, when they're looking for a reference letter, they are not looking for anything which they can already see on a transcript. अगर मैं ट्रांसक्रिप्ट दे रहा हूँ उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि मैंने अच्छा स्टूडेंट था नहीं था, ग्रेड अच्छे लिए नहीं लिए, जीपीए मेरा सीजीपीए क्या है क्या नहीं है. what they are looking for are other information. टीमवर्क में कैसा था स्टूडेंट, एटीट्यूड कैसा था उसका, सीरियसनेस कैसी थी, लीडरशिप क्वालिटीज थी उसके अंदर की नहीं थी. मतलब देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स that a referee may talk about which are not found in a transcript, and that's where the gap is. Okay? You need that information, your stakeholders want that information, right? Lekin unfortunately the transcript is too limiting in that regard. Before I move on, sir, aap kuch kehna chahte? I saw you raise your sure. For sure. Obviously, there's a standard formats, and it is customary to establish how you know the candidate, for sure. But essentially, the information they want is other attributes. I mean, that's, would you recommend the student for studies? Would you recommend the students? And what attributes you're talking about? And simplistic, I know from the other side of the, being on the other side of the aisle, जब हमारे सुपरवाइजर के पास आते थे तो वो रेफरेंस लेटर में क्या देख रहे होते थे, क्या चीज़ देखते थे, क्या एट्रीब्यूट्स. ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि एक बड़ा वॉल्यूम आता था. तो OBE जो है, it is not the only, but it is one mechanism that can allow us to give those, sort of document that information and present that information to relevant stakeholders. So this is the idea, and why should we care actually? ठीक है, तो अब इसका एक लेजी आंसर ये है कि हम पाकिस्तान में हैं, हम एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सारी की सारी PEC से accredited होती हैं, so we have to abide by what PEC requires. That is going to be a lazy answer, obviously. I hope you can appreciate it. हम ये कह सकते हैं कि जी वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ हमारी compliance के लिए हमें OBE चाहिए, and that is value. So somebody can say कि being, recognized by Washington Accord is a value, and उसके लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है. लेकिन I hope that many of you can appreciate, before even we go of how OBE is implemented, you would have some, जो मैंने पहले बात की है, some appreciation of why we need to have more information about the skills students have gained over a period of time. Okay? So it's not just that. So what else can be the reason for us to go for OBE, even if PEC does not mandate it? Okay? So OBE focuses on what students can actually do in terms of skills and who they become as people in terms of personality development, in terms of character. And this is quite important
and sometimes, and we'll see and establish that it is probably more important than what they know. और ये मैं इसको lightly नहीं कह रहा, ठीक है? तो I've been, like I said, I've worked in the industry for a few years, and additionally, excuse me, we have a small startup where we employ students as well, and I can tell you that degree में grades कितने, GPA कितनी है, that becomes, it's not very important. I'll share a statistic with you. It's a very well-known statistics. मुझे इसकी exactly reference नहीं मिला था before I added it to the slide. लेकिन इसमें जो interesting चीज़ है, and by the way, it's an old study, but there are newer studies, and I'll put them out as well. But the reason why I put it out is that I've seen many studies, and the information is pretty consistent throughout those studies. Even आजकल recently काफ़ी सारी universities हैं जो कि commission कर रही हैं studies, surveys अपने alumni के साथ, prospective employers के साथ, to look into the skill sets that employers are looking for, right? So, and this is pretty consistent. So the pattern is pretty consistent. अगर आप गौर करें कि GPA 3 से ऊपर होना चाहिए, is not even in the top 10, right? And this is the only information your transcript is giving, and this is the information which is not on a priority for employers. And like I said, I can tell you by first-hand experience, and obviously there are loads of statistics. अब online जाके you can look into it, ठीक है? अगर आप गौर करें कि ये जो कुछ हैं skills, honesty, integrity, team skills, interpersonal skills, work ethics, flexibility, adaptability. आपके ख्याल में अगर मैं Bloom's taxonomy की बात करूं, इनको हम कहाँ टेस्ट करेंगे? या where obviously we can test them on multiple domains, लेकिन जिनमें से सर मुज़फ़्फ़र साहब you were थोड़ा सा effective में ज़्यादा. So arguably we can use psychomotor and or cognitive domains to test them to a limit, but effective domain के अंदर इनकी चीज़ों की ज़्यादा value होगी, right? But you have to, so इसमें दो तीन चीज़ें establish हुई हैं. एक तो ये कि these things are important. तो ये चीज़ें हमने अब दिखानी है कहीं ना कहीं, और खाली दिखानी नहीं है, इसका मतलब है कि दिखाने के लिए मैं कोई ना कोई measures, कोई ना कोई test, कोई ना कोई evaluation करूँगा. मैं arbitrarily तो नहीं कह सकता, या आजकल जो स्कूलों में रिवाज है कि जी आपने हर एक को कहना कि जी excellent 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 तो नहीं कर सकते. अक्सर स्टूडेंट हमारे पास रेफरेंस लेटर लिख के ले आते हैं, पता लगता है उनके सारे एट्रीब्यूट्स एक्सेलेंट है, आप बस साइन कर दें. लेकिन टू बी, इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, you need a mechanism. You cannot just do it. You need a substantive documentation criteria. I'll just go to another statistics, and this is quite interesting. ये CED की है, fairly recent, not very recent, but most of the companies that were part of the study were tech companies, IT, engineering. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें attributes, teamwork, problem solving, ability to work with others, critical thinking, oral communication, technical skills, STEM skills. STEM, if you don't know, science, technology, engineering, and maths. ठीक है? Technical skills, STEM skills, way down there. तो ये legend जैसा पता लग रहा है कि dark blue का मतलब है कि essential skill है, और light blue का मतलब है very important, which means if you do not have this essential skill, they will not hire you. ठीक है? So obviously, many organizations also have mechanisms to test incoming candidates, but many of these companies have expressed desire to get that information from the universities, जहाँ पे 4 साल लगा के स्टूडेंट आ रहा है, rather कि वो एक टेस्ट के अंदर वो गेज करें. वो चाहते हैं कि आपके पास एज यूनिवर्सिटी कोई मैकेनिज्म हो जिसके अंदर आप वही काम करें जो वो एक सेशन में या एक इंटरव्यू में करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो. ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स को खाली गेज नहीं करना, हमने उनको मल्टी डायमेंशनल स्किल्स सिखाने हैं. हमने फिर उनको उन मल्टी डायमेंशनल स्किल्स पे ग्रेड करना है, और जब हम उनको मल्टी डायमेंशनल स्किल्स पे ग्रेड करेंगे तो फिर हमने वो इवैल्यूएशन जो है उसको क्वांटिफाइबली प्रेजेंट भी करना होगा. तो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ दी वेयर द होल आइडिया ऑफ ओबीई कम्स फ्रॉम. और इसमें क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो ये है कि नंबर 1, आर दीज स्किल्स बीइंग टॉट? क्या हम ये सिखा भी रहे हैं कि नहीं सिखा रहे? क्या हम सिर्फ
इस चीज पे कंसर्न है। मैं चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 मैंने अपना खत्म करा दिया है, और खत्म करा दिया का मतलब ये है कि मैं बोर्ड पे गया था और मैंने प्रेजेंटेशन दे दी और मैंने क्विज ले लिया, and it should be quite evident, hopefully, that that's not going to cater to all of those requirements. ठीक है, तो क्या हम ये चीजें अपने यानी कि हम आया के एक्सप्लिसिटली बाय प्लानिंग सिखा भी रहे हैं और उनको टेस्ट करने के हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, क्या हम उनको ग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उन एट्रीब्यूट्स पे? क्योंकि ग्रेड नहीं करेंगे तो यू कांट रियली से एनीथिंग सब्सटैंशियल अबाउट इट. And last but not least, which is probably a policy thing, but ideally these things should be in a transcript or some document which comes along with the transcript. ताकि ये सारी exercise अगर आप करें तो this information should be passed on to all the stakeholders. ठीक है, so this is basically the spirit of OBE in the first instance, especially for those people who feel or who have some reservations, let's say, about the necessity of going through this exercise. So हम लोग just want to establish that there is a value to it. So I hope at the very least most of you would agree that there's a value of these assessments. I hope. Rizwan साहब agree कर रहे हैं? ज़बरदस्त. So OBE aims to mitigate deficiencies in traditional academics by ensuring two things. Number one, teaching is based on outcomes. And number two, assessments are quantifiable and gradable. इसका मतलब ये है कि जब मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूं at the beginning of the course, and obviously over time, over semesters, over years, these things should mature. But at that time, I would have an understanding of what is required of me as a teacher. In terms of all the आपकी CDF होती होगी document मेरा ख्याल है, या course descriptor file सबको मिलती होगी, उसमें मेरा ख्याल है it's a standard practice कि उसमें कोई ना कोई डिटेल दी होगी किस किस्म की आउटकम्स चाहिए. तो आपने हमने सबने टीच करना है with those outcomes in mind, और उसके बाद हमने ग्रेडिंग भी डिजाइन करनी है. दिस कैन बिकम ट्रिकी. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन अप्रिशिएट कि जी देयर इज अ लॉट ऑफ इशू विद रिगार्ड्स टू some domains. और फोकस क्या होना चाहिए कि what the student has acquired and not, and this is key by the way, what the student has acquired, not what the teacher has delivered. आप एक किताब से पढ़ाएं, आप 20 किताबों से पढ़ाएं, आप किसी एक किताब से ना पढ़ाएं, लेकिन at the end of the day अगर आप कहते हैं कि जी मैं signal processing पढ़ा रहा हूं, and you're fairly confident that all aspects of being proficient in signal processing, be it technical aspects, hands-on aspects, whatever, if you're fairly confident that they are able to do it, then that's your outcome. So that's why we call it outcome-based education. ठीक है, तो OBE recognize करती है कि skills की, तो स्किल एक बात तो क्लियर होगी, हमने स्किल्स को करना है, लेकिन स्किल्स एक किस्म की नहीं हो सकती. स्किल्स मल्टी डायमेंशनल है, स्किल्स की कई एग्जाम है, और उनमें भी अगर आप कहें तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो वेरी कर सकती हैं. अगर हम बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करें तो हम एग्री कर सकते हैं कि हमारे पास नॉलेज बेस्ड स्किल्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, हैंड्स ऑन स्किल बेस्ड एट्रीब्यूट्स हैं. नाउ दीज मे बी डिफरेंट. लाइक हमारे एक्सपीरियंस में रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हैंड्स ऑन स्किल में बहुत अच्छे होते हैं. दे आर प्रीटी पुअर एंड इन टर्म्स ऑफ डीप नॉलेज. They're poor in fundamentals, like in any aspect of hands-on work, they're very good at. Character based, ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए जिसके जरिए, और पैमाना ऐसा होना चाहिए जो यूनिफाइड पैमाना हो, राइट, जिसके जरिए आप बता सकेंगे उसने कौन सी स्किल किस लेवल पे हासिल की. तो OBE जो है वो एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करती है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, ताकि हमें स्टैंडर्ड एंड क्वांटिफाइबल टर्म्स में मिले. अब ये पैमाना जो है ये नहीं हो सकता कि एक, मतलब हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, but it would be very counterproductive if one university is doing one standard, or let's say individual faculty members are doing one thing. ठीक है, तो what we want is a standard, and the standard that we are going towards by the recommendation of PEC is the Bloom's taxonomy standard, which is going as a structure and nomenclature to document our OBE outcomes. ठीक है, तो आपका जो Bloom's taxonomy है वो recognize करता है कि वही बात जो हमने पहले की कि type of skill है जिसको हम Bloom's taxonomy में specificity कहते हैं और level of complexity है. ठीक है,
तो दो डायमेंशंस हैं लर्निंग आउटकम की। एक है हमारे प्रोग्राम की लर्निंग आउटकम, यानी कि अगर एक स्टूडेंट एक डिग्री प्रोग्राम कर रहा है, बीएस इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन ऑन अ ब्रॉडर लेवल, और फिर how does he come to that completion of the degree program is through completing individual courses, and we want to have an understanding of what every student has gained in every course. Excuse me, थोड़ा सा आगे चला गया, excuse me, ये ले, yeah, I do apologize, I think yes, great. तो हम लोग चाहते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली पीएलओज और सीएलओज को इस्तेमाल करें एज अ मैकेनिज्म टू डॉक्यूमेंट दीज गेन्स। और दिस फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सोनॉमी में आपको पता है कि कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निशन मेरा ख्याल है सबसे आसान है समझने के लिए, जिसके अंदर नॉलेज किसी ने क्या गेन किया। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज व्हाट इट इज, बट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हाउ मच इंफॉर्मेशन दे हैव गेन्ड। अफेक्टिव डोमेन बात करती है एहसासात और रवैयों की, एटीट्यूड की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एंड मैच्योरिटी की। सो आई वुड से, आई वुड आर्ग्यू कि इट इज अ मेजर ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ अ स्टूडेंट, एंड द मैच्योरिटी कैन बी इन डिफरेंट डायमेंशंस and it can have different levels of depth. And then you have psychomotor domain, which is talking about practical hands-on action-based skills, right? I'm sure कि ये जो ग्राफ है ये आप सबने देखा होगा। वेरी गुड। इस पे ये एक्शन वर्ब्स लिखे हुए हैं। कोई मुझे बता सकता है, आपका मैडम नाम क्या है? बीनेश। आप बता सकते हैं कि एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीस एक्शन वर्ब्स? थोड़ा बीनेश, थोड़ा सा मेरा ख्याल है there can be some added dimension to these. Let me just put it, let me point out to these verbs here, right? So these are different verbs, and the reason why they have been given here is or should be indicative of something. तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आपका नाम मैं भूल गया, बल्कि आपसे सर, ब्लू जैकेट, वकार। वकार, आप बताना पसंद करेंगे कि वर्ब्स का क्या सिग्निफिकेंस है? जी जी, श्योर, बिल्कुल। Perfect. So what these verbs indicate is, and this is now obviously very easy to understand up to this point, कि मेरी जो assessment है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, बाय द वे, ये सिक्का बंद नहीं है, दिस इज नॉट रिटन ऑन स्टोन। लेकिन अगर मैं असेस कर रहा हूं किसी स्टूडेंट को और मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैं उसको C5 पे असेस कर रहा हूं, नाउ दिस इज माय क्लेम, and I'm saying I'm assessing the student, yeah, this question, yeah, this assignment, yeah, this project is on C5, और मेरे सवाल की नेचर ये हो जिसमें सारे सवाल ये हो, define this, define that, explain that. If that is what I'm doing, then I'm not testing the student on C5. Now, the reason why I'm going to stop here for a minute and take a moment is that if you know, when we visit universities or even in our own experience, this has been a problem with faculty members in the sense that उनको इस चीज़ से issue आता था. Not a problem with them. I do apologize for my misphrasing, but a problem that they face, which is they understand this concept and they fit in. तो क्या होता है, और ये मैंने खुद देखा है होते हुए, कि क्योंकि ये C5 पे है, तो they're still asking define question, they're still asking that question, define it, but they're now retrofitting these verbs. क्योंकि अगर हमारा HOD ने हमारा देखा या किसी और ने देखा या PC का ऑडिट होगा, तो यार उनको अगर ये कंबाइन का लफ्ज नजर आ जाएगा तो वो उनको पता नहीं लगेगा, ठीक है? And now the problem, there can be many reasons why that is happening. It should not happen, but in my experience personally, so मैं इसको generalize नहीं करूँगा, ये होता है कि कई फैकल्टी मेंबर्स जो हैं they do it after the fact. अक्सर क्या होता है, मिड टर्म के बाद, फाइनल से पहले फैकल्टी मेंबर्स को ख्याल आता है कि यार मेरे कोर्स में
5 CLOs थे, 4 CLOs थे, और ये था, ये कॉग्निटिव डोमेन में था, ये C5 पे था, ये A3 पे था। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो क्विजेस हो चुके हैं, या फर्ज करें कि आगे जाके आपका कंटेंट जो है वो उसको मैच नहीं कर रहा, right? Your content is not matching it, but you are somehow trying to now fit these verbs in to make it look like it belongs to that domain. Now this is a huge problem, and I think इसका जो key issue है वो ये है कि अगर, और हमारे experience में we have had very positive outcomes, कि अगर faculty members जब उनको कोर्स असाइन होता है उस वक्त वो CDF को बैठ के पढ़ें। और मैं सर आपको आई वुड एनकरेज यू कि आप इस तरह की एक्सरसाइज कराएंगे जब आप कोर्स असाइन करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो यू शुड हैव अ सेशन वेयर एवरीबॉडी कम्स एंड एक्सप्लेन्स what the outcomes, individual outcomes of their courses are, and what they are planning to do in that regard. जी जबरदस्त, दिस इज बिफोर द सेमेस्टर स्टार्ट्स, जबरदस्त। तो उसमें फिर ये होता है कि आपको यानी कि क्लैरिटी हो, एंड आप अपना कोर्स और असेसमेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंगली डिजाइन करें ताकि आपको इस किस्म का मसला ही ना आए, ठीक। तो दिस इज अ थिंग। जी जी श्योर जी जी श्योर श्योर ठीक ठीक। अच्छा मुजफ्फर साहब, first of all I would request all of you कि मैं questions I'll try to do in the end so that I can finish it off, but very quickly I'll address, it's a very good question and this is also a mistake which we've seen quite commonly. This is not going to happen organically, या ऐसा नहीं होता कि जी chapter 1 जो है वो lower cognitive domain में होगा, और now foundational subjects में कई दफा ऐसा होता है, लेकिन आप गौर करें कि this is not about level of complexity in technological terms. We're not talking about levels, and I'll repeat this. We're not talking about levels of complexity in technological terms. So the first chapter may have concepts that are, let's say, fundamental, foundational, and then you have more complex, let's say mathematics की बात करते हैं तो आप progressively grow करते हैं. But this is not what it's talking about. एंड लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप 6-8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं और हर चैप्टर का जो पहला, उसमें कई सवाल ऐसे होंगे जो कि इस तरह के सवाल होंगे जो कि डिमांड करेंगे कि आप उससे पूछें कि मुझे डिफाइन करो, मुझे समझाओ। तो दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी डिस्करेज्ड एंड देयर शुड बी एन आई ऑन इट, कि ये कई दफा लोग ये करते हैं सीडीएफ में कि जी पहले 2 चैप्टर CLO1, दूसरे 2 CLO2, इस तरह से एंड सो ऑन सो फोर्थ, and that is, but then you will have problems now fitting in those questions. It's quite possible, especially अगर आप चौथे, पांचवें, छठे सेमेस्टर में जाएं, कि वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, अगर हम जैसे इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा रहे हैं, तो every chapter is going to have components that are going to require knowledge based understanding. They were going to have application based content, there's going to be analysis based content, there's going to be synthesis based content, excuse me. So the way your CDF should be designed is कि आप जितने भी इस तरह के सवाल हैं, चाहे वो ट्रांसेंड करते हैं तमाम चैप्टर्स पे, जो कि नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स की लेट्स से आर्टिकुलेशन के ऊपर लिमिटेड हैं, चाहे वो एडवांस चैप्टर में चाहे बेसिक चैप्टर में, दे शुड ऑल लाई इन C1. I hope that answers your question. And so sir, that is the absolute nirvana. Yes, the CLOs do not necessarily have to be tied to the sequence of the chapters. Okay? Not necessarily. So you could have CLO1 जो कोई encompass कर रहा है शुरू के भी chapters को, end के भी chapters को. But having said that, एक practicality जो है वो ये है कि जब आप course start करते हैं, एक
माइक्रो लेवल पे आप कोर्स को भी देखते हैं, ठीक है, कोर्स ओवरऑल प्रोग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट कोर्स इटसेल्फ शुरू में जो आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली अगर फंडामेंटल कोर्स है, स्टार्ट में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट और ग्रेजुअली जो क्लास के साथ आप मूव कर रहे हैं, तो आप जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ाते जा रहे हैं, आप टॉपिक्स जो है ज़्यादा रियल में, तो इट डज काइंड ऑफ एंड अप दैट वे. अभी आई थिंक ultimately our goal होना चाहिए कि CLOs are do not necessarily have to be coupled with the sequence of the chapter of the content. Okay? But to begin आपने कहीं से शुरू करना है. अगर आप बहुत absolute वो जाएंगे ना, जिसको क्या कहते हैं वो Americans कहते हैं, let not the perfect be the enemy of the sufficient. ठीक है ना? अगर आप perfection achieve करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते हैं कि जो sufficient या necessary है उसको आप overlook करोगे. I think to begin with, अगर problems हैं आप course को CLOs वगैरह assign कर रहे हैं, तो I think in the start you can do this, but I think concept should be very clear back end पे कि it doesn't necessarily have to be that way. क्योंकि कोर्स कंटेंट के हवाले से, कोर्स आउटलाइन के हवाले से ये जरूरी नहीं है ओबी सिस्टम के अंदर के जो आपके टॉपिक्स है, कंटेंट है, उसकी उस तरह से मैपिंग की जाए कि ये जो कंटेंट है दिस इज CL1 ऑफ दैट कोर्स. Not necessarily. For instance, signals and systems सब लोग पढ़ते हैं. आप let's say CLO1 जो है वो encompass कर रहा है basic definitions. तो आप इस तरह से ड्राफ्ट कर रहे हैं, that depends कि आपका stated purpose क्या है. CLO1 के अंदर अगर आप definitions include कर रहे हैं, right? तो आप सिग्नल सिस्टम उसको इस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं कि सिग्नल सिस्टम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आर्टिकुलेट कर सके, चाहे वो टाइम डोमेन से मुतल्लक हो, ठीक है ना, सिग्नल्स की मैनिपुलेशंस, जहाँ वो फ्रीक्वेंसी या ट्रांसफॉर्म डोमेन हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एस डोमेन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, फिर एनालिसिस के लिए आप एक CLO लिख सकते हैं. यू कैन डू इट दैट वे. ठीक है, बट जो दूसरा तरीका था उस पर जो आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन था, you can for instance मतलब अगर आप चैप्टर कंटेंट पढ़ा रहे हैं और आप उस पर्टिकुलर क्लास के साथ भी ड्यूरिंग द कोर्स प्रोग्रेस करेंगे, दैट्स व्हाट यू आर एमिंग टू, द बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट्स यू नो उनको पॉपुलराइज कर रहे हैं, एंड एज द कोर्स प्रोग्रेसेस यू आर गोइंग टू मेक द असेसमेंट टफर एंड टफर. ओके, सारी असेसमेंट ये एनालिटिक्स के ऊपर है, लेट्स से at some stage, right sir, sorry. Sure. C5 related to the services, I mean, backgrounds as was like design आपने पढ़े थे. जी. Let's say अगर मैं जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है. कोर्स टू कोर्स ये चीज वैरी करती है. समटाइम्स आप कंटेंट पर जा सकते हैं. Let's say अगर मैं किसी CLO को 4th लेवल या 5 लेवल में सेट कर रहा हूँ. जी. So again इसका मतलब है कि उसका C5 means कि उसका maximum level that I can do. मतलब अगर मैंने उसको लेवल 3 असाइन किया हुआ है असेसमेंट के लिए CLO के लिए, तो मैं C5 का क्वेश्चन नहीं दे सकता. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें चीज बताता हूँ कि एक तो जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रेडिशनली वो ये है कि इफ यू आर टेस्टिंग समथिंग ऑन C5, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, तो द अंडरस्टैंडिंग इज दैट it may contain elements of lower let's say levels of that same domain, obviously. But the thing is कि जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि it should not be focused on C3. अगर आपने लिखा हुआ है कि मैं C5 पे टेस्ट करूंगा ये एट्रीब्यूट. चलिए आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लेते हैं. मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं. मैं क्वेश्चन ये था कि let's say what we can do, let's say in C5 that is the upper maximum. मैं आपसे वही क्वेश्चन करने लगा हूं. लोअर लेवल के से बहुत कम परसेंटेज के क्वेश्चन Exactly. should be on C5. Exactly. So I was going to ask you a counter question. Let's आपने selected CLO डाला हुआ है C5 लेवल पे. अब उसकी असेसमेंट आप कैसे करेंगे? क्या every instance of the assessment will be on C5? It's not necessary. Let's say I would answer to that question. Let's say 20 marks का question है, तो I would say कि not more than 4 or 5 marks can be from lower level, but major chunk of the course assessment should be from the higher level. Essentially इसका मतलब ये है कि C5 का जब आप क्वेश्चन पूछेंगे
एग्जाम में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं तो यू वुड वांट द क्वेश्चन टू हैव पार्ट ए बी एंड सी राइट बिकॉज यू ऑल्सो वांट टू डिलिनिएट सेपरेटली कि जी ये पार्ट शुरू की डोमेन का है ठीक है कुछ मार्क्स आप शुरू की डोमेन को दे देंगे बिकॉज इफ यू एंड अप doing every assessment on purely on C5 probably half of your class is going to flunk ठीक है ना आप उनको शुरू के कुछ 2-4 नंबर ठीक है ना कुछ परसेंटेज जो है वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं जो ग्रेजुअली बिल्ड अप बट डेफिनेटली इफ यू आर क्लेमिंग इट इज C5 assessment then at least I would say as a rule of thumb this is no जैसा वो सर ने भी कहा ना कि वो सिक्का बंद नहीं है but to me as an evaluator and maybe I'm a gentle evaluator, I would at least like to see that 60% of the evaluation for that particular CLO is genuinely carried out at C5 level. Maybe 20-30% जो है ना वो मैं flexible है 20-30% assessment अगर lower level पे हो रही है build up है it's a build up towards the C5 I'll maybe accept that ठीक है but if you are claiming in the CDF that this is level C5 then I want to see an overwhelming majority of the assessment actually carried out on C5 ये जरूरी और वो आप ये नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन आपने दिया हुआ है तो वही C5 है और वही उसका एक पार्ट जो है ना वो ये नहीं because जैसा सर ने शुरू में कहा ना कि it has to be quantifiable right so probably you will have to make it into parts भाई ये पार्ट ए में था ये सारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी डाल के एक्चुअली मेजर मार्क्स जो है वो तो पार्ट सी के let's say 60% 10 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 2 नंबर ये थे ताकि सारी क्लास उसको कर ले लोअर लेवल पे और 6 नंबर का जो क्वेश्चन था पार्ट सी उसका वो एक्चुअली C5 पे वाकई टेस्ट कर और नजर भी आ रहा है तो आपने ये सेग्रीगेशन थोड़ी सी जो है ना वो यानी नजर आए कि अगर C5 आप प्लेइंग कर रहे हैं तो यू नो इट शुड बी क्लियर बाकी C5 पढ़ के देखें इसमें मैं भी अपना 5 सेंट्स थोड़ी ऐड कर लेता हूँ कि व्हाट वी एनकरेज आवर फैकल्टी एंड allied faculty to do is कि we सजेशन नहीं होती है हमारी कि आप सवाल ही अलग बना लें मतलब अगर फर्ज करें आपके कोर्स के अंदर वाकई एक CLO है जो C2 C3 पे है और एक CLO C5 पे है और आप एक ही टॉपिक को C2 पे भी टेस्ट कर रहे हैं C5 पे भी टेस्ट कर रहे हैं तो इट इज लेट्स से मैनेजरियल व्यू पॉइंट से इट्स ईजियर अगर आपके सवाल अलग हो रादर कि एक सवाल के पार्ट्स हों तो आई एम श्योर यू कैन अप्रिशिएट इट कि जब उसका अपनी OBE कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द डे दैट इज गोइंग टू बी much easier. So we strongly discourage faculty members to test multiple CLOs in a single question because it's उसका जो overhead है OBE कैलकुलेशन का वो काफी वो है वो तो ये हो जाएगा ना कि आपने CLO5 आपका वो जो CLO4 है let's say वो C5 पे मैप कर रहा है उसके पार्ट A B C है A में आपने जेनेरिक किस्म की चीज जेनेरिक किस्म का स्टार्ट कर लिया बट प्राइमरीली वो क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी ही है मेजर मार्क्स का चंक जो है वो C5 लेवल की है आपने जब CLO के आपने लिखा है कि C5 पे ग्रेड है but the major part of the assessment has to be genuinely C5 ठीक तो बहरहाल ये डोमेन्स मेरे ख्याल है सबको वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड एक्शन वर्ब्स हमने बीच में क्वेश्चन आंसर का वी आर गोइंग यू नो हमारा थोड़ा सा वो बट वी आई थिंक वी आर फ्लेक्सिबल विद टाइम आई होप ओके श्योर ठीक जी अलग इफेक्टिव डोमेन में मैं ये तो आप ये एक्शन वर्ब्स हैं आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ठीक है तो ये हमारे I'll address more I'm expecting more questions in the Q&A anyways but I'll just go through this कि ये हमारे जो 5 लेवल्स हैं रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग ठीक इंटरनलाइजिंग भी कहते हैं तो आप ये देखें कि विलिंगनेस टू पे अटेंशन जो है इसका मतलब है कि स्टूडेंट इज एबल टू डिफरेंशिएट एक्सेप्ट एंड लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू नाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन योर माइंड वुड इंटेल दिस काइंड ऑफ आउटकम ठीक है अगर आप लिटरेचर पढ़ें स्पेसिफिकली इफेक्टिव डोमेन का तो even if a student is let's say attending a class even if he is coming in he or she is taking part in an activity जो कि mandated activity हो that is going to be something which is going to map on the first level of effective domain and like I said we can talk about it
with examples moving forward. अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, आपने कहा कि असाइनमेंट जमा कराओ, उसने असाइनमेंट जमा करा दी, ठीक. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर, यहाँ तक तो इट्स फेयरली सिंपल. जो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है लोगों के लिए वो ये है कि जो वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली ये है कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट इम्पार्ट कर रहे हैं ना, उसमें एक थोड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग इसको हमेशा फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी देखते हैं, बट दैट्स नॉट नेसेसरली द केस. लाइक यू मे बी टीचिंग political science and you may have a point of view, yeah, for that matter you may be teaching quantum physics and there are many competing points of view, right? Now अगर आप कहते हैं कि मैं quantum physics पढ़ा रहा हूं और एक स्टूडेंट आता है and he attends the class, that is going to be A1. अगर आप उसे कहते हैं कि आप कुछ एक्टिविटी में हिस्सा लें, आप मैंडेट करते हैं और वो उसमें लेता है, ठीक है, that would be A2. उसके बाद student has an increased proficiency in what is being talked about. There is certain level of acceptance of your ideas. वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, आपका भी एक point of view है and I'll consider it. That is going to be A3. Organization क्या है कि student shows interest in discussing, theorizing and formulating on those ideas. यानी कि now student is getting an interest और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इस चीज के अंदर. और आखिरी वाला जो है वो ये है, जो सबसे टॉप लेवल है, जिसको हम इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं, इंटरनलाइजिंग भी कहते हैं, कि वो स्टूडेंट ने जो भी आपने पार्ट किया उसने उसको इतने अच्छे तरीके से इंटरनलाइज किया कि इट्स बिकम पार्ट ऑफ हिज ट्रू, कहते हैं कि इसकी जो ग्राउंड ट्रूथ है ना वो उसकी सेट हो गया. अब वो इनिशिएट करेगा एक्टिविटीज विद अदर पीपल. आई हैव अनदर स्लाइड व्हिच इज फ्रॉम अ सेमिनल पेपर इन जो है कार्थवॉल का इफेक्टिव डोमेन की, बट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी काफी काम है. तो ये एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रिसीविंग में ये है कि आप कहते हैं कि जी मैं बैडमिंटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, या कोई बैडमिंटन नहीं खेलता, तो एक स्टूडेंट आके कहता है कि जी वो सुनता है कि बैडमिंटन क्या चीज है, तो ये A1 है. उसके बाद वो कहता है कि आप कहते हैं यार मुझे आई नीड हेल्प इन समबडी सेटिंग अप, ग्राउंड बुक करा लो, नेट लगा लो, और वो अब उस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है, ठीक है. तो ये A2 है. आपने कहा कि जी now this is interesting, this is now tricky by the way, क्योंकि इसमें ना फॉर्मुलेटिव असेसमेंट आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी आउटसाइड द ग्रेडिंग स्टैंडर्ड. आप उसे कहते हैं कि जी ये एक्टिविटी हो रही है एंड अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाएं, मैच हो रहा है. So this is now purely voluntary, and if the student comes up, takes part in the, you know, as an audience, इसकी मिसाल ले लें कि आप कहते हैं कि जी एक ग्रुप है, 2 बंदों का ग्रुप है, आप एक कोई प्रोजेक्ट पे काम करें, आप में से दोनों भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एक भी प्रेजेंट कर सकता है, अगर किसी ने नहीं प्रेजेंट करना तो भी प्रेजेंट कर सकता है. फॉर्मुलेटिव में इसलिए कह रहा हूं, आप कहते हैं कि मैं इसका नंबर नहीं लगा रहा, कोई पेनल्टी नहीं होगी, और उसके बाद एक स्टूडेंट या दोनों स्टूडेंट आगे कहते हैं कि नहीं, हाँ हम अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, A3, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन है, he is getting involved, that student is getting involved. उसने कहा कि जी मैं तो अपना रैकेट भी खरीदने लगा, ठीक है, मैं इसमें हिस्सा लूंगा and I enjoy taking part. So nobody is telling me, now I am driven myself. तो ये जब सेल्फ ड्रिवन हो जाता है, जब वो कोई ऑर्गेनाइज करने को तैयार हो जाता है या केपेबल हो जाता है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर रीच कर रहे हैं. एंड लास्टली वो ये है कैरेक्टराइजेशन. उसको बैडमिंटन इतनी अच्छी लगी कि जब वो अपने गांव गया, उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, उसने कहा मैं आप लोगों को बताता हूँ बैडमिंटन एक गेम होती है और वो वाला काम करता है जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया था शुरू में, ठीक है. नाउ दैट पर्सन हैज internalized it as part of, उसने कहा जी मैं बैडमिंटन के बगैर रह नहीं सकता. So I hope that this is an example which would resonate with you. So it doesn't necessarily have to do with like I said कि हमारा बड़ा एक myopic सा view होता है कि जी it's talking about ethical or moral concepts. It can be talking about any concept really. It is about attitude, ठीक है. और जैसे मैंने बताया कि हम लोग attitude को as an employee मैं आपको बता सकते हैं कि students को हम कहते हैं कि जाके search करो. कई दफा हम कोड देते हैं और स्टूडेंट जो है ना वो आके जैसे उसका पहला बग आता है, मैटलैब लैपटॉप लेके सर क्या किया था मैंने, कंपाइल किया, चला नहीं कोड, ठीक है.
And then there's other students who are going to go online, they're going to search, they're going to take that initiative. अब ये अच्छा, by the way, sorry, ये नहीं होगा. So मैं फर्ज करें इन दोनों को समझाता हूँ कि यार आपने गूगल पे जाके सर्च करना है यार, this is something you have to do, and then one of them does it and one of them does not. So these are progressions in attitude. ठीक है, I hope you're getting some idea in terms of what effective domain is. Sure. What are the assessment tools? मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन दे लिखा हुआ है ABC लिखा हुआ Sure. है उसको एडिटर में या मीटर में क्वेश्चन दे उससे रिलेटेड तो वो 50% टॉपिक देखें, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चीज़ ये है कि जब हम और हम रूब्रिक्स की जब बात करते हैं तो वो भी इसलिए आती हैं. जब हम किसी खास चीज़ को जज कर रहे हैं, इट कैन एंटेल दैट वन थिंग कैन एंटेल इफेक्टिव कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटिव. ठीक है, लेकिन अगर आप इफेक्टिव स्पेसिफिकली कर रहे हैं, अगर हम लिटरेचर देखें तो उसमें एक तो ट्रेडिशनली आप क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें फिर ये है कि ऑब्जर्वेशनल, मतलब 3 रिकॉग्नाइज करते हैं कि जी सेल्फ असेसमेंट हो, स्टूडेंट को आप कोई सर्वे दे देते हैं और सीखते हैं कि जी हाउ डू यू फील अबाउट दीस थिंग्स. सो द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, सो इफ आई वांट टू टेस्ट समबडी स्ट्रिक्टली ऑन एन इफेक्टिव डोमेन, राइट, और मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी यू कैन give me an idea how comfortable you are with it, are you confident about this concept, would you use this thing if you're working on a project, let's say. So that is like और इसमें कई आपको पता है कि modalities बहुत सारी हो सकती हैं. So it could be on a 1 to 5 scale, it can be a multiple choice, whatever. आप एक तो ये चीज़ हो सकती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्जर्वेशनल हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशनल ऐसा होंगी कि अगर आप कहते हैं कि जी लेट्स से टीम वर्क करनी है और आप जो है सुपरवाइज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दीज आर थिंग्स व्हिच यू फैकल्टी मेंबर वुड बी एबल टू ऑब्जर्व. और हमारे अक्सर लैब्स के अंदर जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर जो और स्पेशली जो ग्रेडिंग सुपरवाइजर कर रहा होता है. So the grading an examiner is going to do is obviously limited, but the grading that is required of a supervisor is going to look into these things. The supervisor has to comment on if that student in his observation or her observation was good working in a team. तो आप उसको ऐसी बात है टीम वर्क्स की वैल्यू इंस्टिल करेंगे, लेकिन अगर वो ये चीज कर रहा है या नहीं कर रहा, so this is something and we grade them on these things. I mean, we require the supervisors and lab in charges to grade students on these. I mean, I hope that answers your question. let's say the case yellow scale of 1 to 3 Sure. or a faculty member is evaluated as A, B and C. Sure. Whatever. जी. So इसके अंदर is there a factor जो मतलब इस yellow contribute कर रहा है obviously affected domain को मेरे हिसाब से. जी. तो इसके अंदर कितने परसेंटेज assess मुझे affected domain को करना चाहिए, कितने cognitive को, और how it will contribute toward a single yellow. obviously एक ही yellow के पर ये मैप हो रहा है. इस तरह की कोई प्रैक्टिस किया जाता है. मतलब अगर उसमें तीनों डोमेन से है, दो डोमेन से, तो ये बेसिकली आप रूब्रिक्स डिजाइन करेंगे. I think let me just get here. Sorry. I think this is going more on the lines जहाँ आप एक CLO को 2 PLOs पे मैप करने जा रहे हैं. ठीक है? ये आपकी गुफ्तगू, this is where it's leading to. Actually, because आपके certain learning outcomes they are engaged towards effective doing. For instance, आपका जो PLO 11 है, वो क्या है? Can anybody? Team project management, Individual and teamwork. teamwork, project management. Time है वो. अब individual and teamwork क्या चीज़ है? Are you going to test the theories of teamwork, या उस पे ऐसे दिखाना है teamwork की theory पे आप वो assess करने जा रहे हैं, या आप teamwork का जो attitude है आप उसको assess करने जा रहे हैं? First of all, which one? It's going to be the attitude. So that means your CLO, wherever it is appearing, in whatever course, or whether it's appearing in the final year project, that CLO will be purely affective domain, and it will be mapping to yellow level. और उसकी assessment फिर कैसे होगी? उसकी assessment descriptive question से नहीं होगी. तो मेरा क्वेश्चन से डॉक्टर आगे ये कि यहाँ जैसे ये समटाइम होता है कि आपने क्लास लेवल डिफाइन की, अगर प्योरली मैं किसी एक को फैक्टर में डाल रहा हूँ, obviously we have defined rubrics for that as well.
बट आपने लेट्स से उसको मैंने हमारा ये होता है कि सीएलओ को एवेल्युएट करने के लिए एंड टर्म्स ऑफ इंटर में उसकी कोई ना कोई परसेंटेज आनी चाहिए समटाइम्स प्योरली इफेक्टिव ये जरूरी नहीं है ना वो फॉर इंस्टेंस I mean again let me say this is your infrastructure जो आपने स्ट्रक्चर इंपोज किया ना उस पे I would say कि जी जो आपका कोर्स लर्निंग आउटकम अफेक्टिव डोमेन में है राइट उसको आप लेट्स से टीम वर्क है प्रॉबेबली जिस तरह सर ने कहा आपने उसको प्रोजेक्ट दिया हुआ है सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उस सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर एक कंपोनेंट है टीम वर्क का ठीक है वो टीम वर्क के मार्क्स जो है वो आप उस सीएलओ पे वहां पे एंटर करेंगे आप रूब्रिक के ऊपर वैल्यूएशन कर रहे हैं ठीक है या लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है टिपिकली आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जो वो सारे पीएलओस को मैप कर रहे हैं अब उसकी जो मार्क्स जाके डलने हैं पीएलओ 11 पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ठीक है उसको आप कैसे असेस करेंगे उसके लिए आपने रूब्रिक बनाई होगी ठीक है ना उस रूब्रिक पे आप स्टूडेंट को ग्रेड कर रहे हैं और उसके नंबर अगेंस्ट दैट सीएलओ पे वो एंटर हो रहे हैं वो एक दैट्स व्हाई जो इंसिस्टेंस है वो इस चीज पे है कि 1 सीएलओ 1 पीएल ये टेक्निकल टर्म्स ऑफ मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स या क्रेडिट लेट्स से जो अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो एक्टिव बेसिस सब्जेक्ट है इंग्लिश के या फिर प्रोफेशनल एसेस टाइप के इनके अंदर अगर प्योरली एक सब्जेक्ट लेट्स से सीएलओ को अफेक्टिव डोमेन में रखते हैं हमने प्रोसेस करना है मीडियम फाइनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने डालना है तो समटाइम्स डिफिकल्ट होता है कि मैं जिसको मैं जस्ट उस लेवल पे कर रहा हूं बट मैं रिटर्न उसके अंदर क्या एक्शन वर्ब या किस तरह उस क्वेश्चन को बनाऊं डेफिनेटली रूब्रिक्स पे जज करना तो इट मेक्स सेंस ठीक है बट देन द क्वेश्चन इज आप असेस क्या कर रहे हैं इफेक्टिव डोमेन में व्हाट इज एग्जैक्टली आर यू फॉर इंस्टेंस लेट मी आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन ये टेंस क्या है कम्युनिकेशन जो है which communication are you talking about it can be oral communication it can be written communication so are you assessing the written communication आपने ऐसे दिया उसको let's say और आप उस पे effective domain में PLO 10 पे मैप कर रहा है वो assess कर रहे हैं right so then your rubric would be based कि ठीक है इसमें जो writing है एक लेवल पे ये है कि grammatical mistakes उसमें बिल्कुल यानी परफेक्शन ये है कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का इशू नहीं है बहुत उसने कंसाइजली जो बताई गई चीज उसको उसने इंट्रोड्यूस किया है ओवरव्यू पेश किया है बाद में कंक्लूड किया है ठीक है ना दैट वुड बी एब्सोल्यूट परफेक्शन और रेंजिंग ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 4 ग्रेजुअली उसमें कुछ चीजें आप निकालते जाएं कि लेट्स से प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं किया चीजें लिटरेचर सर्वे किया है राइट उससे नीचे चले जाने नहीं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी इसकी ठीक नहीं और लेवल 1 पे ये है कि बिल्कुल उसने उसकी तो ग्रामर भी ठीक नहीं है और यू नो अब ये कॉग्निटिव असेसमेंट है या फैक्टिव यू टेल मी ये क्या है लेकिन ऑब्वियसली ये क्या है आप ही हमें क्या है दैट्स नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे में सर आप जवाब के ऊपर वो रिस्पोंड देखिए ना अगेन दैट्स व्हाट मैं आपका सवाल समझ गया हूं एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस काउंटर क्वेश्चन मैं उसको ऐसा दे दूं कि यार रेनी डे जैसे फॉर इंस्टेंस तो मैं तो उसकी कॉग्निटिव में मैं कैसे उसका एटीट्यूड चेक करूं द पॉइंट इज कि आपने अपने कोर्स डिस्क्रिप्शन फाइल में जब आप कह रहे हैं ना इफेक्टिव डोमेन जैसा सर ने कहा ना कि जनरली पीपल टेंड टू एसोसिएट इफेक्टिव विद ethics only it is not that that's very important to understand you can have effective domain assessment in different dimensions team skills प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी आप इफेक्टिव में डाल सकते हैं ठीक है कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इफेक्टिव ठीक है सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स where you can assess effective does not have to be limited to this a word sir ne use kiya it doesn't have to be a myopic view of effective domain ke sirf professional ethics ही effective domain no it's not like that तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप पहले ये बताएं कि उस कोर्स फाइल के अंदर जब आप वो इफेक्टिव असेसमेंट कर रहे हैं वो इफेक्टिव असेसमेंट किस पीएलओ पे जाके मैप कर रहे हैं
Which one? let's say again 10 के वो करता है कम्युनिकेशन तो करता है ना, फिर आपकी रूब्रिक जो है वो उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन होगी। नहीं मेरा सर सिर्फ ये था कि आप मोर और लेस हमारी जो स्टडी आप जैसी है, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर मैंने लेट्स से उस क्वेश्चन को उसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन देना मैंने मीडिया फाइनल में, तो सब रूब्रिक्स के अगेंस्ट इन चीजों को असेस करना लॉजिकली बहुत ही आसान है, बट इफ आई पुट इट ऑन अ पेपर असेसमेंट में उसके हिसाब से कर रहा हूं तो वो थोड़ा सा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि why do you have to put everything in the terminal paper? Which CLOs, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। As I said, देखें, first of all let me make this statement and statement कि जो चीज मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो absolute truth है, ठीक है? We happen to be one of the first organizations जिन्होंने OBE implement किया और one of the first जिनको level 2 accreditation मिली और अल्हम्दुलिल्लाह तब से चलती आ रही है, ठीक है? So we must be doing something right? Having said that, this is not the only way to do things. So हमारे यहाँ ये है कि हमने as a matter of policy हमने कोशिश की कि भाई हर कोर्स जो है ना इंजीनियरिंग में कुछ लैब कोर्सेज हैं जिनके लैब कंपोनेंट साथ होता है, कुछ कोर्सेज हैं जो प्योरली थियोरेटिकल बेस है, ठीक है? हम लोगों ने स्टार्ट में अपना जो प्लान किया, हमने कहा कि जी हम थ्योरी पार्ट के लिए 4 CLOs असाइन करेंगे और अगर लैब कंपोनेंट भी है, आपके यहाँ पे लैब रहता है, कोर्स होती है या कोर्स 3+1 कोर्स होते हैं आपके ना, ठीक है? तो हमने कहा कि ठीक है, जो थ्योरी वाला पार्ट है ना हम 3 से 4 CLOs उसके लिए रखेंगे और जो लैब वाला पार्ट है ना 2 CLOs हम उसके लिए मुख्तस कर देंगे, ठीक है? और जितनी ये इफेक्टिव डोमेन वाली या साइकोमोटर वाली असेसमेंट है ना उसको हम अकोमोडेट करते हैं इस लैब वाले CLOs में, वहाँ रूब्रिक से असेसमेंट होती है एंड इट्स बॉटम अप थ्रू। वो जब हम क्लेम कर रहे हैं ना कि हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को असेस कर रहे हैं तो हम फिर जाके उसको उस PLO पे भी मैप कर रहे हैं और वहाँ रूब्रिक भी उस PLO के मुताबिक यदि वो इफेक्टिव डोमेन की हमारी ओवरऑल असेसमेंट के अंदर तो आ रही है। लेट्स से आप कहते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन की आपकी असेसमेंट जो है वो 70% होनी चाहिए, ठीक है? और रफली स्पीकिंग आपकी साइकोमोटर प्लस इफेक्टिव जो है अराउंड 30%, 30-70 की रेशियो होनी चाहिए ना। अब इफेक्टिव वाले बैक एंड प्रोफेशनलिटीज को भी असेस कर रहे हैं, उसमें हम कम्युनिकेशन को भी असेस कर रहे हैं, उसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल को भी असेस कर रहे हैं, टीम वर्क को भी कर रहे हैं और इनके रूब्रिक्स रहते हैं, बट इवेंचुअली वो सब के सब इफेक्टिव में जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हम रूब्रिक बेस ही कर रहे हैं सिर्फ। आप पेपर देखेंगे ना, पेपर में हमारे जो है वो मेनली कॉग्निटिव वाले क्वेश्चंस ही हो, बिकॉज पेपर के ऊपर आप कॉग्निटिव ही कर सकते हैं ना। इसमें भी सर फिर वही है कि जो जैसे हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन वो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें फिर उस तरह से किया जा सकता है जैसे भी हमने बात की कि लेट्स से वी वांट टू असेस द राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। एग्जैक्टली। अगर कुछ और इस तरह का स्किल है जो वर्बल कम्युनिकेशन है तो वो आप वर्बल कम्युनिकेशन जो है आप लेट्स से उनसे प्रेजेंटेशन लेते हैं इंग्लिश के अंदर ना, इंग्लिश के अंदर लेट्स से आप उनसे प्रेजेंटेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट टू इंश्योर कि हर दफा जब भी वो कोर्स ऑफर होगा उसमें प्रेजेंटेशन हमेशा हुआ करेगी, हर स्टूडेंट देगा, ठीक है? और आप वो प्रेजेंटेशन वो जो कम्युनिकेशन है लेट्स से PLO 10 के ऊपर आप असेस कर रहे हैं, इफेक्टिव डोमेन की आपकी असेसमेंट होगी, रूब्रिक आपके पास है। मतलब एग्जैक्टली मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड सर कि हर CLO को मीडिया एंड टर्म में इवैल्यूएट करना नॉट नेसेसरी रिटनली, मतलब आपने अगर उसको इवैल्यूएट सिर्फ अगर कोई ऐसा कि रूब्रिक्स में लॉजिक होती है तो फिर इनफ प्रेजेंटेशन हमने उसको वहां पे किया, बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है ना? हमने इसको एट द आउटसेट हमने ये चीज इसको जब हम डिजाइन कर रहे थे हम लोगों ने देखा कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पेन एंड पेपर वाली असेसमेंट के अंदर वो अकोमोडेट हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं शायद जो कि आपको कहीं और असेस करना जो है ना उनका नेचुरली वो बनता है, ठीक है? जैसे साइकोमोटर स्किल्स जो है जब आप टेस्ट करेंगे तो वो आप क्वेश्चन पेपर में तो नहीं कर सकते ना, वो तो आपको लाजमी लैब में करनी है। सो व्हेरेवर वी आर मैपिंग टू द साइकोमोटर डोमेन वी आर डूइंग इट इन द लैब। क्वेश्चन पेपर में हमारे कोई ऐसा CLO हम
असेस ही नहीं कर रहे जो साइकोमोटर पे। साइकोमोटर सिर्फ वेक्टिव का इशू था, वो ऑब्वियसली जो हमारे लैंग्वेजेस या हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट है उनमें ये क्वेश्चन अक्सर मेरे सामने आता था कि सर इसको पेपर पे आप इसका आंसर दे दीजिए। इस पे सर मैं भी थोड़ा सा ऐड करूं, हमारी एलाइड फैकल्टी को अक्सर बड़ा प्रॉब्लम होता है। आई जस्ट गो विद अ ट्रिक क्वेश्चन बाय द वे एंड देन आई प्रोसीड। वकार आपके पीछे बैठे हैं, सॉरी का नाम, सॉरी आसिम। आसिम, अगर आप स्टूडेंट हो, एक सवाल आए, डिफाइन एथिक्स इन इस्लाम, किस डोमेन में लाई करता है आपके ख्याल में दिस क्वेश्चन? So this is the question, which domain do you think it lies in? Affective domain में है, and I would disagree. This is cognitive. This is asking you definition of a term जो सर ने भी बीच में बात की थी कि आप सब आपकी आउटकम क्या चाहिए. If I'm asking you what ethics is, the question itself, that definition that you are going to give me is not telling me anything about your attitude. इस चीज को रेकग्नाइज करें. अगर let's say आपके many of you have children और काफी सारे पेरेंट्स हैं आजकल, they are very concerned कि हमारे बच्चों का एटीट्यूड, ठीक, मोबाइल फोन बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. Now things that have to do with attitude, they are going to be tested on using different mechanisms. ठीक है, इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ. आपने ऐसे डॉक्यूमेंट की मिसाल दी. अगर आप एक डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, स्टूडेंट हैज टू पुट इन अ रिपोर्ट, और ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वी गेट अ लॉट फ्रॉम आवर allied faculty, for example, right? Now उसमें जो that one piece of document can be part of an assessment which is psychomotor. That document can be part of a cognitive outcome. यानी उसमें अगर उसने वो technical information सारी लिखी हुई है, but then there may be some other elements which have to do with affective domain. Now जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कहते हैं कि जी हर स्टूडेंट जो है वो अच्छी ग्रामर इस्तेमाल करे. So this is going to be another assessment altogether. This is one of the rare examples where a document can be assessed. आप कहते हैं कि जी plagiarism ना करे. अगर वो document लिख रहा है तो वो citation करे. Now maybe from a technical standpoint, whatever thesis he is presenting or she is presenting in that document is fine, right? लेकिन अगर मेरी कोई आउटकम है और फर्ज करें कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश का जो टीचर आगे पढ़ाएगा जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें इफेक्टिव डोमेन में हो. अगर आप उससे कहते हैं कि जी आके ये काम करो, आपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है और जाके प्रेजेंट करना है, सो दे आर गोइंग टू बी इन दैट लेट्स से आउटकम एलिमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू एड्रेस. और तो फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको पीएलओ सॉरी सीएलओ जो है वो क्या कह रही है और आपने फिर क्या चीज टेस्ट करनी है. अगर सॉरी यहाँ आवाज आ रही है, फॉर इंस्टेंस ये लोग एक मैप कर रहा है, ये प्रोजेक्ट मॉडल यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल एथिक्स. आप जो बनाएंगे रूब्रिक उस पे लेट्स से, अब वो थीसिस डॉक्यूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट है ना, उसको असेस कर रहे हैं. अब उसमें क्या है कि जी स्टूडेंट का काम जर्मन है, दूसरा ये है कि उसका आइडिया जो है वो ओरिजिनल है या उसने कहीं से बोरो किया है. फाइनली प्रोजेक्ट में इट्स फाइन टू बोरो, जरूरी तो नहीं कि वो थीसिस पीएचडी करके लिखा ना. उसने क्या जो बोरो किया है, वर्ड्स उसके अपनी है लेकिन उसने प्रॉपर्ली साइट नहीं किया. जैसे रिसर्च पेपर्स में भी होता है ना, आप कहते हैं कि रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन के सेक्शन में आप कहते हैं ये मेरा क्लेम है, ये नोबल कंट्रीब्यूशन है इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो बनाने जा रहे हैं, और रिव्यूअर कहता है कि नहीं, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं एक्चुअली ये तो आपके अपने रेफरेंस के अंदर फलां जो बंदा है उसने ये काम किया हुआ है, एक्चुअली आपका कंट्रीब्यूशन किस पे बिल्ड कर रहा है. तो यू आल्सो हैव टू प्रॉपर्ली गिव क्रेडिट. दे आर टू सेपरेट थिंग्स ना. वो प्लेजरिज्म तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल आपने वर्बेटिम उठा के चीज रख दी, और एक ये है कि जहां क्रेडिट देना चाहिए था आपने नहीं दिया, उसका काम या उसका कंट्रीब्यूशन किसी और का खुद से आप अपने खाते में डाल रहे हैं, राइट? तो वो कुछ और है. बट ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर प्रोफेशनल एथिक्स. मतलब PLO 8 हम अक्सर इन कंफ्यूजन है ना, हम उसको मैप तो कर देते हैं, बट इट्स नॉट एथिक्स. अगर आप PLO 8 की स्टेटमेंट पढ़ें, इट्स प्रोफेशनल एथिक्स. सो बीइंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ टेस्ट हो रही है? यही है ना, प्लेजरिज्म के हवाले से प्रॉपर साइटेशन we had should recognize के जहां क्रेडिट ड्यू है
वहाँ एक्नॉलेज करना चाहिए दूसरे का क्रेडिट, ठीक है। और अपना जो काम है उसको बेशक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, लेकिन जहाँ क्रेडिट ड्यू है वो भी नहीं। सर मेरा क्वेश्चन जी मुजफ्फर साहब, जैसे हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जी लैब्स है, वो जनरल प्रोग्रामिंग लैब्स है ना, तो कंटेंट वहाँ पे अगेन जो हमारी स्टूडेंट्स की जो एक्सरसाइज की है सपोर्ट रिलेटेड टू पोजीशन श्योर, ये नॉलेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और वो चीजें हैं, क्या जैसे आप अपने सपोर्ट करवा रहे हैं जब आप लैब में असेसमेंट देते हैं वहाँ पे हमारी लैब के केस में इंस्ट्रूमेंट का फीचर मैं हर चीज का ना आई हैव पास अकाउंट बिकॉज़ दिस इज ए लैब। Do you think being a software based lab you cannot only assess cognitive? नहीं तो बेहतरी क्या है कौन सा करेंगे? फैक्टरी करेंगे कौन सा करेंगे? फैक्ट्री का मतलब फैक्टरी जैसे उसमें माइंड सेट को इवैल्यूएट और उसके बाद टीम वर्क व्हाट अबाउट ये जो सर ने जुमला बोला था प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इन्होंने आपको मिसाल दी कि जी आपने इसको मैटलैब का कोड दिया, ठीक है, और आगे कंपाइल करके और ये चीज आप करके ले आना। एक बंदे ने गूगल पे सर्च किया और उसने सॉल्यूशन फाइंड कर दिया जो कि डिजाइन था, इन्होंने सर को पता था, इन्होंने रखा हुआ था वो कैवियर बीच में कि कोई चीज ये करें और उनको मिल जाए। दूसरा बंदा लैपटॉप उठा के आ जाता है कि सर बताएं ये तो कंपाइल नहीं होगा, इससे आगे नहीं होगा। तो आप वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है उसकी उसको असेस करें, ठीक है ना, कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली कॉग्निटिव बैकएंड पे है, ये हर विजिट में तकरीबन जाता आप लोग सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सोल्डरिंग सबने की है, ठीक है। अगर मैं सोल्डरिंग एक्सेस करनी है, अगर मैंने कॉग्निटिव डोमेन में करनी है, तो आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन इन द पेपर कि जी डिस्क्राइब कि क्या क्या मटेरियल चाहिए सोल्डरिंग के लिए और मुझे सीक्वेंशियली स्टेप्स बताएं, ठीक है। मैं आपसे नॉलेज पूछ रहा हूं और ठीक है आप भी लिखते हैं जवाब, मैं भी लिखता हूँ, मुमकिन है मेरा जवाब आपसे बहुत ज्यादा इलोक्वेंट, बहुत उसमें डिटेल्स हैं और नंबर पूरे मुझे मिलते हैं, आपको नंबर मुझसे कम मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको पकड़ाता हूँ सोल्डरिंग गन और ये सामने पीसी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये सोल्डर आप लगाएं और ये वाला सोल्डर जो है ना ये पकड़े फ्लक्स की तार, ये सोल्डर मैं लगाता हूँ, कॉग्निशन मेरी बेहतर है, ठीक है। लेकिन जब हम सोल्डर करने बैठते हैं पता लगता है कि आपका परफेक्ट है, मैं जो सोल्डर कर रहा हूँ वो यहाँ ड्राई सोल्डर है, यहाँ उसका बीच में बबल आता है, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी गोइंग टू असेस? इफ आई एम गोइंग टू असेस द मोटर स्किल, ठीक है, तो यू विल गेट अ बेटर ग्रेड देन मी, राइट। उसके बैक एंड पे कॉग्निशन तो चाहिए, अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा तो हाउ कैन यू बिगिन टू डू द सोल्डरिंग इन द फर्स्ट प्लेस? बट आर्म्ड विद द सेम नॉलेज, ठीक है, वी आर नॉट टेस्टिंग कॉग्निटिव स्किल्स कि सोल्डरिंग के बारे में आप कितना लिख सकते हैं, नो, वी आर टेस्टिंग हैंड्स ऑन, ठीक है। अल्टीमेटली जो रूब्रिक होगी वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रही, वो टेस्ट कर रही है कि आपका सोल्डर जो है वो मजबूत हुआ है, तार हिलाता हूं तो तार निकल आती है, सोल्डर का वो ब्लॉक अपनी जगह खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बैक एंड में नॉलेज है सोल्डरिंग, बट वी आर नॉट टेस्टिंग द नॉलेज, वी आर टेस्टिंग द मोटर स्किल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इफेक्टिव या साइकोमोटर टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, उसके बैक एंड में कुछ ना कुछ नॉलेज तो है जो उसने गेन किया हुआ है, उसी की बुनियाद पे वो कर रहा है, but it boils down to what are you wanting to assess? आप किस चीज को फोकस कर रहे हैं, किस पीएलओ पर टारगेट कर रहे हैं, थ्रू एंड थ्रू आपकी यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो ये होनी चाहिए आपके असेसमेंट। ये नहीं हो सकता कि आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो आप मतलब सोल्डरिंग वाली एग्जांपल ले लें, क्वेश्चन आपने दिया है सोल्डरिंग की, उस पर लिखें डिटेल्स, क्या मटेरियल है, क्या सीक्वेंस है, और असेस आप उसको कर रहे हैं साइकोमोटर में, और आपने उसको लेट्स से मॉडर्न टूल यूज किया लो फाइल में जाके मैप किया हुआ है और P3 पे आप कर रहे हैं, टोटल इनकम्पैटिबिलिटी बड़ा सा काटा है इसमें, ठीक है। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैब है, हम 5 स्टूडेंट्स को एक स्नेक गेम कराने के लिए आप स्नेक गेम को, ठीक है, अब वो पांचों स्टूडेंट्स स्नेक गेम आउटपुट पांचों की सेम है, जो हमें आउटपुट चाहिए वो चल रही है,
लेकिन अब जो पांचों ने उसको कोड किया है वो पांचों डिफरेंट है। किसी ने कहीं पे स्टेटमेंट लगाई है, किसी ने कहीं पे फॉर लूप लगा दिया। तो उनकी जो एफिशिएंसी है प्लस जो उनका कॉग्निटिव नॉलेज था वो यहाँ पे साथ इंक्लूड हो जाता है कि उनकी कॉग्निशन कितनी है कि उन्हें कौन सी बेहतर कोड को इस्तेमाल किया। तो उसमें फिर हम साथ कॉग्निशन भी टेस्ट करेंगे किसी तरीके से, जैसे हम वाइवा ले लेते हैं लैब के अंदर या डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन जो The point I'm trying to make here, again, let me emphasize कि जब आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बैक एंड पे नॉलेज भी है, बट यू हैव टू बी क्लियर कि आप कौन सी चीज असेस करना चाह रहे हैं, आप नॉलेज कर रहे हैं या स्किल कर रहे हैं। सर आपका नाम, आपका सही नाम है ये ट्रांसपेरेंटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एक ओवरराइडिंग मसला ये है कि आप लोग एक सीएलओ को मल्टीपल पीएलओस में मैप कर रहे हैं। उसी चीज को आप कॉग्निटिव पे भी करते हैं। what they are doing is that they have a part of assessment जो कि cognitive को मैप कर रही है in the lab, राइट and then there is another part that is also focusing on psychomotor. पार्ट जो है ना, पार्ट इज अ वेरी जेनेरिक टर्म, I mean, I think they have मकसद कहने का मकसद है कि लेट्स बी वेरी क्लियर कि इस फ्रेमवर्क के अंदर टारगेट करें जब एक सीएलओ है ना, वो सीएलओ किसी एक चीज को कर रहा है, या वो साइकोमोटर को कर रहा है, या वो अफेक्टिव को कर रहा है, या वो कॉग्निटिव को कर रहा है। और फिर जब वो कर रहा है ऊपर जाके वो सीएलओ जिस सीएलओ को मैप कर रहा है ना, उनकी भी आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप अफेक्टिव डोमेन में असेसमेंट कर रहे हैं और जाके कॉग्निटिव डोमेन के सीएलओ पे आप उसको मैप कर रहे हैं, वो भी तो मिसमैच है। Question is like we have different CLOs. We have a separate CLO for cognitive. Sure. We have a separate CLO for psychomotor. Sure. And the CLO that's mapped to the psychomotor has its own PLO. So can we have different CLOs in lab? No, of course. Again, this is what मेरे ख्याल में आपके सॉफ्टवेयर के पॉइंट प्लस स्टैंडपॉइंट से देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट की मिसाल दी थी। एक tangible outcome, and let's say a software program is a tangible outcome as well. Let's say. So, and a tangible outcome can be tested on multiple domains, i.e., multiple CLOs. Okay? Now, all of them may be cognitive, maybe one is cognitive, one is psychomotor, one is affective. Okay? It really depends. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी CDF क्या कह रही है? That's the first question. So, if your CDF says, "Okay, I want to test my student on this, and this domain." Let's say, let me put it this way. I want to test my student, I want to, in every lab, I want to test if he is gaining proficiency to solve problems in C. The student has an understanding of the syntax of C, and he is using good practices, indentation करता है, comments लगाता है. Now, these are three different domains. ठीक है? एक है साइकोमोटर, क्या एक तो ये कि वो कोड लिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? दिस इज नाउ मैपिंग ऑन अनदर पीएलओ, ठीक है। अगर उसकी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, आपने अच्छी प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने बताया ना, अब तो वैसे बताया कि जो आईडीज हैं वो काफी चीजों का ख्याल रखती हैं, लेकिन पहले लोग जो हैं वो इंडेंटेशन नहीं करते थे, एक लाइन में कोड लिख रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे, ठीक है। सो दैट piece of tangible outcome, that one piece of tangible outcome may be assessed differently, लेकिन what you cannot do is, जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं, कि आप वो मल्टीपल सीएलओस एक पीएलओ पे मैप कर रहे हैं, they are going to go to different PLOs. For example, हम लोग है ना, ये प्रॉब्लम जब हमारी भी लैब्स हैं, कुछ लैब्स हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, ठीक है, उन लैब्स के अंदर कहीं हमने सोचा कि वो जो दो सीएलओ बनने के बाद किए हुए हैं लैब वाले कंपोनेंट, उनको हमने कैसे, हमने अपना पर्सनल हमने कहा कि ठीक है, कम्युनिकेशन तो हमने डाली, अब मेरा कोड राइटिंग होगी और आगे के क्लास में हमने एक सीएलओ इंप्लीमेंट किया हुआ है मॉडर्न टू यूसेज, और उसके अंदर मॉडर्न टू यूसेज में हार्डवेयर बेस्ड एप्स के जैसे सर्किट है 1 2, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, डीसी सर्किट एनालिसिस, डीसी सर्किट एनालिसिस, यहाँ पे आपने इक्विपमेंट यूज करना है, वो हार्डवेयर बेस्ड एप्स है, वहाँ पे आप साइकोमोटर कर सकते हैं। उसने सर्किट बनाया है, सर्किट जो है वो मॉड्यूलर है, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चल रहा, ट्रबल शूट करना उसको आसान है, यानी पावर रेंज या +5 वोल्ट की ऊपर प्लेन नजर आ रही है, नीचे ग्राउंड की नजर आ रही है, ताकि कंप्यूटर सर्किट देख के विजुअलाइज कर सर्किट का। दूसरे का सर्किट है वो इट्स अ जंगल ऑफ वायर्स, आप आते हैं एज इंस्ट्रक्टर देखते हैं, आपको शायद आधा घंटा लगेगा समझने में
कि ये सफिक्स ने ब्रेडबोर्ड पे पॉपुलेट किया है, जब आप उसे कहते हैं सेटिंग चेंज करो, he or she can manipulate the scope properly, उसको ऑसिलोस्कोप के ऊपर सेटिंग्स चेंज करना आता है, चेंज कर रहा है वो, ठीक है ना, एफिशिएंटली ट्रबल शूटिंग कर रहा है। तो हार्डवेयर के लिए अलग रूब्रिक, likewise you can make an effective domain rubric, for instance for software based labs, on problem solving ability, यानी वो उसका कोड जो है वो जो लिखता है, it has nothing to do with syntax, चाहे वो पाइथन है या सी है, Pseudo code. सिंटैक्स को नहीं देख रहे, उसका कोड जो है वो मॉड्यूलर है, कोड के अंदर जो है वो इट्स वेल कमेंटेड, ठीक है, प्रॉब्लम अगर आ जाती है, कोड कंपाइल नहीं कर रहा तो वो इस काबिल है कि वो प्रॉब्लम खुद डिटेक्ट करके मेथोडिकल वे के अंदर वो एनालाइज करके अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है, he doesn't come to the teacher for each and every problem, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इफेक्टिव डोमेन के अंदर आप उसको मैप कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स के सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब में सर्टेनली अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैंने हमारी सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब और ये हम साइकोमोटर्स में असेस कर रहे हैं, आई वुड बी वंडरिंग कि क्या चीज असेस कर रहे हैं साइकोमोटर्स। सर मैं ये क्वेश्चन अभी आपसे ही कहने लगा था कि क्या आपके ख्याल में जो कंप्यूटर बेस्ड लैब है, सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब है, क्या उसमें साइकोमोटर सीएमएल होने चाहिए? मतलब कैसे होंगे आप मुझे बताइए क्या करें? वो देखें, वो हम जो इसको साइकोमोटर रिलेट्स विद द फिजिकल मूवमेंट ना, तो हम उसको समहाउ कहीं पे ये कह सकते हैं कि चले कोई कीबोर्ड वो यूज कर रहा है, माउस यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा है विद द हार्डवेयर, तो इसको क्या हम उस कैटेगरी में लेके जा सकते हैं? सर कितनी हमने गुफ्तगू की है उससे बात कर सकते हैं। नहीं सर, if I say कि like there are different softwares to compile, to run different domains जिसमें होता है, जैसे जावा के लिए something else, they would add on more, उसकी जो नॉलेज है ऑफ दैट टूल, जिसमें आप वो जो इन्वायरमेंट जिसको कहेंगे वर्क इन्वायरमेंट, उसकी जो नॉलेज है या उसके ऊपर जो हैंड्स ऑन उसकी प्रैक्टिस है, वो we be able to map that to psychomotor। देखिए वो अब तो क्या ना नॉलेज दैट्स कॉग्निटिव, और जो मैंने इफेक्टिव की बात की ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इट हैज नथिंग टू डू विद द जो उसका सिंटैक्स है लैंग्वेज का, वो पाइथन की प्रोग्रामिंग हो रही हो या वो सी की हो रही हो या वो मैटलैब की प्रोग्रामिंग हो रही हो, जो मैंने आपसे भी बात की है वो इट इज ट्रांसपेरेंट टू दैट, वो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इट हैज नथिंग टू डू विद द नॉलेज ऑफ द सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट लॉजिक, मतलब अगर आप एक लॉजिक को एक पर्टिकुलर, देखिए सारी लॉजिक को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जब हम उसके अंदर इंटरप्रेट करते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इट इज अ स्किल सेट। सर मैं इसी बात पे ऐड करना चाहूंगा, लेट्स से आई एम प्रोग्रामिंग इन C++, अब फॉर लूप एक नॉलेज है ना, तो सिंटैक्स हो गया, वो करता क्या है, आप एक प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम में अप्लाई करना फॉर लूप को, और ऑब्वियसली बात है अगर मैं अच्छी तरह अप्लाई करूं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू सर्टेन किसको मैप करें, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि आप बताएं ना दैट प्रॉब्लम is that psychomotor, पहले इस पे आ जाए ना, is that psychomotor, आपकी खामोशी ही जवाब दे रही है। So actually the knowledge part of this aspect is cognitive, but when the action word that is going to नहीं वो नहीं है यार, by any stretch of imagination it doesn't, वो होता नहीं है। अगर आप बहुत स्ट्रेच करना चाह रहे हैं तो ये कहेंगे जी द फैक्ट दैट ही इज एबल टू टाइप, मैं चलें लेट मी उसकी टाइपिंग एफिशिएंसी के ऊपर साइकोमोटर असेसमेंट करना चाहते हैं कि कितनी देर में, लेकिन वो कोड में तो वो नहीं हो रहा ना, वो तो एक बंदा जो ऑफिस असिस्टेंट है वो 100 वर्ड्स जो है ना पर 30 सेकंड को कर सकता है, वहां पे तो उसकी साइकोमोटर स्किल आप कहेंगे, कीबोर्ड के ऊपर उसके हाथ चलते हैं। एक स्टूडेंट है वो एक लेबोरेटरी कोर्स के साथ काम कर रहा है, लेबोरेटरी कोर्स को एक कुछ कैलकुलेट करता हूं लैंग्वेज एंड कोड वो अपने ये लेके जाता है और उसको उसमें इम्प्लीमेंट करता है, तो व्हाट इज दैट, यू एग्री, व्हाट आर द if the code is working perfectly fine, देखें क्या है रोबोट छोड़ देना, आप बताएं, आप यू आर रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सिटी, you tell me in all of this what are you assessing, first you tell me that
show me the documentation and then I can commit. ये कहना कि जी मैं रोबोट बनाया वो चल रहा है, अब इसको मैं क्या असेस करूँ? यू टेल मी, आपने किस तरह असेस करना है? आपने इसको कॉग्निटिव में करना है, आपने इसको अफेक्टिव को एप्टीट्यूड टेस्ट करना है स्टूडेंट का, यहाँ आपने कोई साइकोमोटर स्किल टेस्ट करना है। और थ्रू एंड थ्रू आपका वो जो सिस्टम है असेसमेंट की रूब्रिक है या क्वेश्चन जो आपने पोज किया हुआ है उससे लेकर सीएलओ के साथ उसकी मैपिंग और उस सीएलओ की मैपिंग ऊपर जाके किसी पीएलओ में, थ्रू एंड थ्रू इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। सर इस सेंस में तो अगर कोई क्रॉस लैंग्वेज है, नॉट अ कोडिंग, इट्स नॉट अ स्किल, स्किल नहीं आती आपकी मतलब बात करें, क्योंकि स्किल सेट के हिसाब से देखा जाए तो आपने कोई भी मतलब कि कोडिंग देखिए मोटर स्किल क्या है उसमें, मैंने आपको मिसाल देके बात कर दी ना कि ऑफिस असिस्टेंट है, वो तो मैं मान सकता हूँ कि 100 वर्ड्स पर 30 सेकंड में टाइप कर सकता है, दैट इज मोटर स्किल। सबको पता है कीबोर्ड का लेआउट ये है, ठीक है, लेकिन वो उसकी प्रोफिशिएंसी है ना, मोटर स्किल है। सर इसमें मतलब हम आपके रिजल्ट की बेस पे हम साइकोमोटर को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं और मे बी आफ्टर 1 ईयर जो है वो हमारे पास कोई वैल्यू क्लास में कहते हैं आपको साइकोमोटर को है ही नहीं। या फाइंड करेंगे यार, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा रहे हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, उस रिस्पेक्ट से ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेफिनेटली साइकोमोटर का सर आइडिया ठीक हो बाकी तो बहुत कम है उसके अंदर पोर्शन, तो लाइक मतलब सिर्फ अफेक्टिव रह गया और कॉग्निटिव रह गया। मे बी वो साइकोमोटर सॉफ्टवेयर के अंदर यस यस आई थिंक जो आने वाले हैं देखें देयर आर, जैसे कि मैंने शुरू में आई विल इन्वोक द डिस्क्लेमर अगेन, ठीक है ना, कल कल को आप ये कहें कि जी विजिट आए और हमने ट्रेनिंग दी थी डॉक्टर शकील से, डॉक्टर हमीद से, उन्होंने इस तरह कहा था, अब आप कह रहे हैं गलत है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा इंजीनियरिंग करिकुलम वर्सेस जो बीएस टेक है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस उनके लिए हमारे लिए वाशिंगटन अकॉर्ड है, उनके लिए वो क्या है सिडनी अकॉर्ड है, ठीक है ना, तो फर्क क्या है? वहां पे शायद वो चूंकि टेक्नोलॉजिस्ट बनने हैं, वहां पे शायद साइकोमोटर का एलिमेंट ज्यादा है, कॉग्निशन वाला कम है। साइकोमोटर में हो सकता है वो P5 तक जाए प्रोफिशिएंसी में ना, मोटर स्किल्स की, बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिस्ट। बीइंग इंजीनियर्स आपका ज्यादा डोमेन जो है वो कॉग्निटिव में, यस यू हैव टू हैव सम नॉलेज ऑफ द हैंड्स ऑन थिंग, ठीक है, आपको लेथ मशीन के बारे में पता है, आपको ये पता है कि लेथ मशीन जो है वो उस पर क्या टूल बनाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली वो आप खड़े होकर जॉब लगाना और उससे वो डिजाइन करना, प्रॉब्ली द टेक्नोलॉजिस्ट कैन डू इट मच बेटर देन यू, ठीक है, बिकॉज़ ही और शी हैज बीन ट्रेन्ड फॉर दैट। वो साइकोमोटर में उनकी डेवलप ज्यादा की गई है इससे ना, आपकी कॉग्निशन में ज्यादा, ठीक है, दैट्स व्हाई इंजीनियरिंग करिकुलम में रफली स्पीकिंग 70% आपकी जो असेसमेंट है वो कॉग्निटिव में हो रही है और साइकोमोटर और अफेक्टिव मिला के 30% हो रही है, ठीक है। आई एम श्योर कि कोई इवैल्यूएटर जब आपको ये कहेगा ना कि अगर आपका सेल्फ कंसिस्टेंट डिजाइन है, राइट, आपकी अफेक्टिव डोमेन नजर आ रहा है कि इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज है, ठीक है, तो साइकोमोटर अगर कम भी होगी तो यू कैन से देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, ऑब्वियसली इसमें जहां जहां हो सकती थी वहां कर, आई डोंट थिंक एनी इवैल्यूएटर वो देखने के बाद क्या करने की साइकोमोटर बहुत कम है, जैसे दूसरा उस पे आपको डिफिशिएंसी नहीं देगा। हाँ ये होगा कि अगर आपके बाकी ऑल द एग्स आर नॉट in the basket. यानी योर कॉग्निटिव इज डूइंग, यानी कुछ और आप कॉग्निटिव में असेसमेंट दे रहे हैं, मैप उसको इफेक्टिव पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसी में जब तड़का लगेगा साइकोमोटर का भी, तो यू आर जस्ट गिविंग एमिनेशन टू द इवैल्यूएटर। सर जो पीसी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी इवैल्यूएट करती है, एक तो ये कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उसके साथ, सेकेंडली ये कि क्या इसके अंदर कोई पोर्शन है, मतलब कोई वेल डिफाइंड तो नहीं, लेकिन एक कि इफेक्टिव डोमेन से इतना परसेंट मैपिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा ना कि वो डिस्क्लेमर इसलिए मैंने कहा ना कि रफली स्पीकिंग अगर आपके पास लेट्स से 70% कॉग्निटिव में है और साइकोमोटर और अफेक्टिव जॉइंटली जो है वो 30% असेसमेंट, यानी अगर मैं 100% टोटल असेसमेंट को ग्रेड करूँ ना कोर्सेज में से 70% ऑफ द असेसमेंट इज इन कॉग्निटिव डोमेन एंड psychomotor and affective jointly is 30%.
ठीक है। अब उसमें ऑब्वियसली अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें साइकोमोटर का एलिमेंट थोड़ा 30% में कम होगा इफेक्टिव करने का होगा, लेकिन अगर आपका प्रॉपरली डिजाइन मैकेनिज्म है इफेक्टिव का तो इवैल्यूएटर क्या लिखेगा कि हाँ साइकोमोटर को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं, फिर आप पूछेंगे कि किस तरह बढ़ाएं, राइट। बट अगर ओवरऑल मसले हैं तो देन असल मेरा ख्याल है टेक्सोनॉमी की जो पर्सपेक्टिव है व्हाट मोटर स्किल or the understanding of what motor skills are, so there's some, let's say, ambiguity. पीसी से जो है उसको evaluate करते हैं और क्या वो उसको सिंगिंग आउट के रिस्पेक्ट से करते हैं? नहीं यार क्वेश्चन क्यों कॉल मैंने कहा ना इंजीनियरिंग का प्रोग्राम क्वेश्चन जो सॉफ्टवेयर के साथ इंजीनियरिंग लगा तो उसको कैसे डील करते हैं? आपको विजिट हुआ है सॉफ्टवेयर नहीं, हमारा पीसी तो नहीं है, हमारा एनसेक मतलब जो एचईसी इसको रन करती है, हम उसके थ्रू विजिट्स करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों का पीसी से क्रेडिटेड नहीं सीक्स में तो आपका सीक्स में तो पीसी के सीक्स तो लगा है वो तो लास्ट है कुछ प्रोग्राम्स देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट प्रोग्राम जिसको पीसी भी कैरी ऑन करती है और एचसीएफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब सारा ट्रेंड एचसीएफ की तरफ जा रहा है। हमारे यहाँ भी यही है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स के फ्रेमवर्क में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैसे सीक्स है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रही है वो पीसी से एक्रेडिटेड है। नहीं सर नहीं है एक्रेडिटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, तो आप जाए ना उसकी वेबसाइट पे सीक्स का है या ईएमई का किसी एक का है जो कि इंजीनियरिंग काउंसिल एमसीएस का हाँ एमसीएस का है एमसीएस का भी है, इन दोनों में से किसी एक का भी, या ईएमई का है या सीक्स का में से किसी एक का है। आप जाएं पीसी की वेबसाइट पे आपको ईएपीसी के मिनट्स में बाकायदा डिसीजन मिलेगा कि जी ये फलाना फलाना बैच जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो क्रेडिटेड है। तो इट्स अ मैटर ऑफ केस, बास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस के अम्ब्रेला में है, बास जगह पे वो जो इंजीनियरिंग की डोमेन है जो भी डिपार्टमेंट है उसको रन कर रहा है, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉइंट डिपार्टमेंट चला रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीसी से क्रेडिट हो रहा है प्रोग्राम। आप लोगों के केस में तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आप एनसीईएससी से बात करेंगे तो वो तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी नहीं कर रहे, जाने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी जा रहे हो ओबीई पे भी जा रहे हो, सिर्फ कार्ड है कंप्यूटिंग वाला वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, जो बीसी का है ना वो उसको फॉलो कर रहे हैं, बट इवेंचुअली इट डिडंट यूज्ड टू बी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उनकी बाइनरी मैपिंग थी। ये सीएलओ जो है जो एबेट की थी ना, ये सीएलओ इस पीएलओ को मैप कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो मल्टी लेवल मैपिंग है ना कि वो मैप कर रहा है तो किस डोमेन में कर रहा है, कॉग्निटिव में, साइकोमोटर असेसमेंट में, ये चीज जो है ये एबेट में नहीं थी, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसमें वाशिंगटन अकॉर्ड में। फिर फर्दर आगे कि साइकोमोटर है तो कौन सा लेवल है, कॉग्निटिव है तो कौन सा लेवल है, ठीक है सर। मतलब इसको आई एम सॉरी मैंने टाइम सरकार लिया बीच में, बट चूंकि वो सेशन थी इसको यहीं पे एड्रेस करना जरूरी था क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाद में बात करते तो ये सोल्डरिंग वाली एग्जांपल जो है ना ये मैं अक्सर ये देता हूँ, उसकी वजह ये है कि इट्स इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड कॉग्निशन और साइकोमोटर के दरमियान। इट डिपेंड्स व्हाट यू आर असेसिंग, नोबडी इज आस्किंग, आपकी मर्जी, आप उसको आपने सीएलओ बनाया हुआ है, आप उसको कॉग्निशन भी टेस्ट करना चाहते हैं, कॉग्निशंस भी टेस्ट करना चाहते हैं उस पे, अगर वो प्रॉपर्ली वो सीएलओ जो है वो लिखा हुआ है उस पे वो किस ब्लूम टैक्सोनॉमी की किस डोमेन में है, किस सीएलओ को मैप कर रहा है, अगर वो कंसिस्टेंट है फाइन, दैट्स आई मीन यू आर यूनिवर्सिटी यू कैन डू इट। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप जो असेसमेंट है वो कुछ और है, मैप आप कर रहे हैं, जो सीएलओ मैप कर रहे हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी की किसी और डोमेन में कर रहे हैं, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए और वो फिर ऊपर किसी और सीएलओ को मैप कर रहे हैं, हैज टू बी कंसिस्टेंट ऑल द वे, दैट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जैसे ये लोग मैपिंग है तो इसका डेटा जिस करता है एक साइड येलो लिखा हो उसके सामने लिखा हो कि मैट्रिक्स डोमेन में वो किस लेवल को मैप कर रहा है, येलो 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 के ऊपर पीएलओ लेवल नहीं होगा, आपको भी पता होगा कि अफेक्टिव डोमेन में है, लेकिन दैट कैन बी एनी लेवल। हाँ जी है वो मेरा ख्याल है उसको चलते हैं क्योंकि सर की प्रेजेंटेशन देयर वाज अ रीजन कि सर से क्यों रिक्वेस्ट की कि पहले प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि वहां पे ये चीजें थोड़ी सी आएंगी। वैसे ऑन अ साइड नोट, आई मीन हैविंग जो था ना डिस्कशन के दौरान साइकोमोटर की एग्जांपल, आप लोग सॉफ्टवेयर वाले हैं, कई दफा इस तरह के भी होता है, स्पीड कोडिंग भी होती है, राइट, सो दैट पोटेंशियली कैन बी, सो यू हैव टू बी
innovative and improvise, and that could be something with a psychomotor outcome, like if somebody can do it in a certain amount speed. ठीक है, आपको आइडिया होगा कंपटीशंस अक्सर हम लोग कराते हैं बच्चों के कि स्पीड कोडिंग के और ये वो, आई डोंट नो, फूड फॉर थॉट। बहरहाल ये दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ सम, सर ने ग्रेडिंग की बात की थी तो मैंने ये एक स्लाइड बताई थी जिसमें ये 5/4, सो ये 4 लेवल्स पे हैं, ठीक है, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट है और ये लोएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट है, बट दीज आर सम rubrics from the affective domain which are part of the FIP, ठीक है। मेरा ख्याल है हमने काफी इस पर डिस्कशन कर लिया, let's move on and then we can do it in the question and answer session, and these slides are going to be shared with you in any case, ठीक। तो पार्ट 2 जिस पे हम जाना चाहते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ OBE, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ इंटेंडेड आउटकम्स कहाँ से आती हैं? कोई भी इदारा है, चाहे वो कमर्शियल इदारा हो, चाहे वो एकेडमिक इदारा हो, उसका कोई ना कोई विजन होती है, एंड वी अंडरस्टैंड कि जी डिपार्टमेंट भी हो सकता है, इदारा भी हो सकता है, एंड द विजन इज ए बेसिक आइडिया, इट्स अ सीड ऑफ एन आइडिया जिसकी बुनियाद पे आप एक मिशन तरतीब देते हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड होता है, उसमें आउटकम्स थोड़े से बेहतर रिफाइंड होते हैं, और उसकी बुनियाद पे अगर हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है तो हमारे पास प्रोग्राम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये क्या चीज़ें हैं? ऐसी ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम, लेट मी पुट इट दिस वे कि दिस इज व्हाट यू as an organization या as a department would like to be known for in a few years. In a few years when your product comes in the market. Now in our case, the product is the student. The few years after our graduates permeate the market, we want to have a certain kind of perception, and that is described by the PEO. और उसको हासिल करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं उनकी लर्निंग आउटकम्स हैं कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीएससी कर रहा है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ दैट थिंग देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट द स्टूडेंट में शुड हैव अटेन्ड, ठीक है। और ये पीएलओ कहाँ से आते हैं? नाउ दीज पीएलओज मे कम फ्रॉम डिफरेंट एवेन्यूज, और डॉक्टर साहब इसको कवर करेंगे डिटेल में, लेकिन इसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पे पीएलओज हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आ रहे हैं, ठीक है। इसके पाकिस्तान में चले, दैट्स द केस, बट दीज पीएलओज मे बी कमिंग फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स, पोटेंशियल स्टूडेंट्स। इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, इंडस्ट्री क्या मांग रही है? हो सकता है कि इंडस्ट्री आज एक सेट ऑफ थिंग्स रिक्वायर कर रही है, कल को कुछ और मांग रही है। इन आवर केस इट्स ऑब्वियसली सिंपलर बिकॉज PEC मैंडेट्स अस कि आप ये वाले पीएलओज जो है वो अटेन करें इन टोटलिटी, ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो हम इसको रिकॉग्नाइज करें, राइट। नाउ इस पीएलओ को अटेन करने के लिए, तो ये पीएलओ तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में CLOs है, ठीक है। तो CLOs आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कि मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। यहाँ पे मैं सर एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि जब हमारी बैक एंड फोर्थ यहाँ पे चल रही थी तो बार बार सर एक सवाल पूछते थे, अब ये जो काउंटर क्वेश्चन डॉक्टर साहब को होता था कि जी आप करना क्या चाह रहे हैं, और जो करना आप चाह रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम द CDF बाय इन मोस्ट पार्ट। बुझिए कि आपकी जो कोर्स डिस्क्रिप्शन फाइल होगी उसमें लिखा होगा कि CO 1 2 3 4 करें। तो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर CQI साइकिल, जिसके ऊपर अगली प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब देंगे, वो ये है कि, और आई एम श्योर कि आपकी इस तरह की प्रैक्टिस होगी कि हर एकेडमिक साइकिल के बाद जिसने जो सब्जेक्ट पढ़ाया होता है, एटलीस्ट वी हैव दैट प्रैक्टिस के आवर फैकल्टी मेंबर्स इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द CDF, यानी आप सब पढ़ा रहे हैं और आप कहते हैं कि यार ये लिखी तो थी, मुझे मिल गई, मैंने कोर्स पढ़ाया, लेकिन कोर्स पढ़ाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज कि यार ये जो उसने लिखा है ना कि ये इफेक्टिव आउटकम हो या ये कॉग्निटिव आउटकम हो, या फर्ज करें जिसने पहले CDF बनाई थी उसने ये काम किया कि जी आपने आइडेंटिफाई किया कि चैप्टर 1 2 3 को उसने CLO 1 कर दिया, C1 पे कर दिया अलग से, और आप कहते हैं कि ये इस तरह से नहीं है। तो जो CQI साइकिल है दैट इज गोइंग टू अलाउ यू एंड मी as faculty members to actually give that sort of feedback and revise it. So CLOs are not and should not be set in stone. This is something which over a period of time should evolve, right? तो मिसाल के तौर पे हमारा डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, उसका विजन है टू बी रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन। हमारा मिशन है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि दिस इज इन कोट्स, दिस इज एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड व्हाट इट इज, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली भी और लोकली भी हम एथिकल भी हमारा स्टूडेंट हो, और प्रोफेशनल भी हो, और प्रोडक्टिव भी हो, और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। इसकी बुनियाद पे जो हमारे PEOs हैं वो ये हैं 4, ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट, पहला वाला है कि डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस फॉर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
fulfill technological needs of society in an ethical, moral, and socially responsible manner, exhibit an ability to function and communicate effectively, and the last one is engage in lifelong learning, right? So this forms the basis of PLOs, ठीक है? और PLOs क्या है कि what a department hopes to accomplish once your students graduate, ठीक है? तो वो specific skill sets, वो specific competencies, and personality growth, character growth, grooming, maturity, all of that is something which we require. और जैसे मैंने बताया कि हमारे जो PLOs हैं, they are coming from engineering. तो आपको याद है PLOs ज़बानी सबको? हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, मैंने पूछे भी आपसे, मेरा ख्याल है सबको याद है जी? श्योर सर, मैं इस पर लाइफ लर्निंग पे आता हूँ. For sure. हाँ नहीं, फॉर श्योर. इसमें हम लोग बेसिकली लाइफ लॉन्ग तो अब नहीं कर सकते. देखिए, इसमें आपको जो आउटकम्स है ना, इन द ट्रू सेंस, आप सर्विस करते हैं एलुमनाई के, फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन यू गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे आर डूइंग आफ्टरवर्ड. लेकिन अब हम लोग, अगर मैं यूनिवर्सिटी सेटिंग में मेरा ग्रेजुएट है और मैंने उसको टेस्ट करना है ऑन देयर एबिलिटी टू, लेट्स से, इंडिपेंडेंटली लर्न समथिंग आउटसाइड ऑफ व्हाट हैज बीन टॉट, ठीक है, तो हम किसी हद तक उसके ऊपर जो है वो देखते हैं लाइफ. अगर मैं पीछे जाऊं तो, अगर यहाँ पे हमने एक था मेरा ख्याल PLO 12 पे, लेट मी जस्ट सी देयर. तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अगर आप देखें कि हम लोग नॉलेज बियॉन्ड कोर्स वर्क टेस्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि द टर्म, you know, saying that if I can vouch this person is going to learn throughout his life, obviously we cannot do that, ठीक है, but we can test them in the sense कि what we do is we ask them to do things that have not been taught to them, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या वो अपने तौर पे पढ़ के कोई नया स्किल सीख सकता है based on what he has already or she has already learned. तो this, अगर आप देखेंगे हमारे rubrics में R5 जो है knowledge beyond coursework, this is where we are mapping it. I'm not saying कि hey, this is just an example of what we are doing, ठीक है? जी जी, sure. चलें, अगर let's agree, so let's start with the common base. So if we agree that if a student can take initiative to learn something new that is within the constraints and confines of a university, a good test. Would you agree with that? Right. तो हम कहाँ पे टेस्ट करते हैं? हमारे कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम इनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और उनके अंदर हम जो है वो A12 के ऊपर लोगों को टेस्ट कर रहे हैं. So these are projects which where the problem statement has not been encountered before. Yeah, they have to put in a number of things together, number of skill sets they have learned in different courses, they have to put them together, but how they are supposed to put them together, how they come together, how they are managed, ये हमने नहीं बताया. और हमने उनको ये कहा है कि आप जाके खुद सीखना है. ये हमने उनको कहा भी नहीं है, हम उनको कहते हैं कि आपने जाके ये बनाना है. I'll give you an example. अभी रोबोटिक्स की सर ने बात की थी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, they know programming, excuse me, they know electronics, they have an idea about interfacing base components with a processor and how to use them, and we ask them to build a robot, for example, a line following robot with, and we don't give them any information beyond that. और हम line following robot तो हम हमारे मेरे ख्याल 3rd semester में कर रहे हैं, तो हमारे 6th 7th में तो they're making pretty sophisticated things, and one of the things they're being judged on, which is mapping on A12, are things that have not been taught explicitly, like it's by planning. So it is clear that for that student to achieve that outcome, they will have to study things above and beyond what they have already covered in their academics that far. Does that answer your question? Sir, if you're giving them a project, sure, is there then a separate CLO for that?
to a single PLO या उसको आप directly map it to a PLO? Uh, You probably do it in FIT. First of all, you asked a number of questions. First of all, I just want to make clear that every CLO is always going to be mapped to exactly one PLO. So that shouldn't even be a question. I mean, just make sure. Sure. If there's a project, Yes. how would you evaluate it? Probably it would come under different PLOs. Yes. The project itself. Sure. Right. So how would you put it in your CLOs, or you won't define a CLO for that? No, for sure. I would have. Obviously, I would have a CLO. Okay, CLO, and then there are multiple PLOs for the project. And you cannot do it. If I have multiple PLOs, then I would have at least as many. First of all, if I have multiple PLOs, I would have at least as many or more CLOs. So I hope that is clear, right? Sure. The second thing is, yes, I can judge a project on multiple PLOs. Let me say that. That's the first thing. And by the way, that cannot, or rather is not limited to a project. It can be research-based outcome. Like sometimes we, let's say yeah. As a researcher project. So, ठीक है. So, sorry. So your question now is. First of all, this has to do with your design. You do not have to assess every PLO in every lab project. So आपके HOD जो हैं वो आपके साथ आपकी टीम के साथ बैठ के you decide top down कि यार इतने I mean if you're going to start somewhere, ठीक है, आप कहते हैं कि यार कम से कम मेरे पास लाइफलॉन्ग लर्निंग जो है फाइनली प्रोजेक्ट होगी, उसके अलावा मैं अपने करिकुलम में इस जगह के ऊपर आई वांट टू टेस्ट इन कोर्सेज में मुझे लगता है कि ये ऐसा इंस्टेंस है जहाँ पे मैं लाइफलॉन्ग लर्निंग असेस कर सकता हूँ, ठीक है। देन यू हैव टू इंश्योर कि उस कोर्स के अंदर अगर आपने लाइफलॉन्ग लर्निंग असेस करनी है बाय डिजाइन, तो वहाँ पे एक सीएलओ होगा जो कि लाइफलॉन्ग लर्निंग को टारगेट करता होगा। ऊपर वो सीएलओ PLO 12 को जाके मैप करेगा, और नीचे फिर आपने जो असेसमेंट है वो कंसिस्टेंटली डिजाइन करनी है जो कि कंसिस्टेंट हो विद द लाइफलॉन्ग लर्निंग एट्रीब्यूट। दैट्स हाउ यू शुड बी थिंकिंग। ठीक है, आप पहले से डिसाइड कर लेंगे कि यार ये करना है। अब जब भी ये कोर्स ऑफर होगा ना, क्योंकि हमारे बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर PLO 12 जो है वो इस कोर्स में असेस है। So I have to have a CLO for PLO 12, and then I have to have an assessment that is compatible with this. That's how you should be thinking. Right. So my question as of let's say there's a project, so आप सिर्फ lifelong learning तो नहीं assess कर रहे होंगे, we're doing other things as well. That depends on you. यानी आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। आपने तो इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। हाँ, आप जैसे सर ने भी कहा ना कि मिसाल के तौर पे आपका जो मिड टर्म है वो भी तो एक असेसमेंट व्हीकल है ना, उसमें आप मल्टीपल सीएलओस असेस कर रहे हैं, हर सीएलओ अपने पीएलओ पे जाके मैप कर रहे हैं। इफ यू वांट, आप एक प्रोजेक्ट भी एक असेसमेंट है ना। आप अगर समझते हैं कि उसमें से आपने मल्टीपल पीएलओ असेस कर रहे हैं, यू वुड हैव टू हैव अ सीएलओ फॉर एवरी पीएलओ, और फिर आप उसके मुताबिक ग्रेड कर रहे हैं। जो अगर कॉग्निटिव पार्ट है, कॉग्निटिव पार्ट के नंबर वहाँ पे लगा रहे हैं। अगर जो अफेक्टिव डोमेन वाला सीएलओ है उसके लिए रूब्रिक है, उसके पार्ट्स अपने पीएलओ पे जाके आपके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो इट हैज टू बी अ टॉप डाउन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। थैंक यू। सर आपका कोई सवाल तो नहीं था? Obviously, sir ने आंसर तो किया। My question actually came from के रीजन ये कि we have seen certain SAR अपनी नॉलेज पे, तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, मतलब एग्जांपल के तौर पे इस्लामियात और पाक के अंदर भी मैंने सीओ डाला है तो मैं नहीं डाला। उसका सिंपल सवाल ये बनेगा कि आप जस्टिफाई करें कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। सर मेरा ख्याल है आप अभी बीच में नहीं थे, मैंने एड्रेस किया था, मैंने बात की थी कि जो CQI साइकिल है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये देखें कि जो CLOs हैं, these can be updated, they should be updated, and if you feel that there is a certain CLO, और हमारे यहाँ बड़े concepts I can tell you कि बड़ा robust and अब तो we have reached a level of maturity। अगर वो चीज़ इस्लामियात के अंदर मौजूद है, ओके, लेट मी उसको मैं आंसर कर देता हूँ ना। जब आप जाते हैं किसी प्रोग्राम पे
इवैल्यूएशन करने के लिए आप सब चीज़ों को देखते हैं ना, हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होगी। मतलब नंबर हम आए हैं, आपकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, जरूरी नहीं है कि लॉन जो है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, या लेट्स से कि बिल्डिंग अच्छी है, लॉन अच्छा है, जरूरी नहीं कि पार्किंग वेल मेंटेन्ड है। मतलब मैं आया हूँ, मैं गाड़ी तलाश करने की जगह तलाश कर रहा हूँ, रिजवान साहब जब तक ना आते आई वॉज लुकिंग अराउंड, ठीक है। बट ओवरऑल जब सब चीज़ों को मैं कमेंट तो करूँगा, बट ओवरऑल मैंने जो है ना किसी चीज़ पे मैं मतलब आपका जो विजिट हुआ है, किसी चीज़ पे आपको डी मिला होगा, किसी चीज़ पे वीकनेस मिली होगी, किसी चीज़ पे कंसर्न मिला होगा, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर जो फाइनल डिसीजन होता है वो सब चीज़ों को मिला के बनता है, ठीक है ना। हो सकता है कि जो विजिट आया हो उन्होंने वहाँ पे इस पे ऑब्जेक्शन लगाया हो, कंसर्न दिया हो कि भाई ये चीज़ आप जस्टिफाइबल नहीं है, जो आप इसको अनलेस उन्होंने जस्टिफाई किया हुआ है प्रॉपर्ली। मेरा सर जो पॉइंट था, मैं एग्जैक्टली इवैल्यूएशन मैं आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि लेवल 2 मिली हुई है और फिर भी उनकी इस्लामियात में क्यों है, मुमकिन है कि वो मैच्योर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और मैंने 2-3 मैच्योर यूनिवर्सिटीज को देखा ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फ्रीक्वेंसी मैंने इधर बढ़ा दिया मेरे थी, तो किन सब्जेक्ट में मैं तो आई वाजंट एबल टू फाइंड आंसर दैट कुड सैटिस्फाई। आई होप कि हमने जो आंसर भी किया है उससे क्लियर हो गया ना कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप डिसाइड, यू आर यूनिवर्सिटी, यू आर गोइंग टू डिसाइड कि जी मैनुअल के अंदर TL और 12 जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ये चीज़ है। इसकी रोशनी में आप फैसला करते हैं कि अच्छा वहाँ पे हम एक टास्क देंगे, लेट्स से कि उनको फॉर इंस्टेंस अगर बात करें पाकिस्तान स्टडीज़ की, सॉरी इस्लामियत की बात करें रफली स्पीकिंग, ठीक है, दिस इज जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। आप बात करते हैं कि जी आप बताएं कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं हाउ दे रिलेट टू द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो जो आपकी एथिक्स जो है वो अप्लाई करेंगे इससे, क्या क्या, या कोई आप केस स्टडी जो है वो लेके आते हैं कि जी इस्लामियत में एक क्वेश्चन है, अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैप करनी है पहले आपने टॉप डाउन आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इस्लामियत में लाइफ लॉन्ग करनी है, ठीक है। आप जरा जाके पढ़ें मैनुअल में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हेडिंग के नीचे क्या लिखा, यहाँ स्टेटमेंट है उसकी मेरे पास अभी, हाँ जी नेक्स्ट स्लाइड में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्टेटमेंट। यस सर, आगे आगे बिल्कुल। An ability to recognize importance of and pursue lifelong learning in the broader context of innovation and technological developments. अब मुझे बताएं कि इस्लामियत में कैसे करते हैं? इसीलिए मैंने पहली बात का जवाब दिया था ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पार्किंग शायद इतनी अच्छी नहीं है। जो जो उसकी बात करें जो कि एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, तो देखिए हर चीज का आप कर रहे हैं, तो आप बताओ ये आइटरेटिव प्रोसेस है, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि 1.5 डेज के लिए हम जो आए हैं तो हम सारी चीजें जो है ना वो आपकी निकाल देंगे, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना। कुछ चीजें होंगी जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं कहते हैं यार बाकी और कुछ इतना लिख रहे हैं इसको चलें अभी जा रहे हैं नेक्स्ट इसको देख लें। कुछ चीजें होती हैं जो ना हम ऑब्जर्व करते हैं और ना रिकॉर्ड करते हैं, तभी तो एक डाइवर्सिटी ऑफ वो है ना, कोशिश यही होती है कि हर दफा नए सेट ऑफ इवैल्यूएटर्स आए ताकि आपके प्रोग्राम का जो रिव्यू है वो रोबस्ट है। मैं अपने थॉट प्रोसेस के साथ जब भी आऊँगा आपके प्रोग्राम के विजिट पे मैं अपने फ्रेमवर्क के साथ करूँगा, लेकिन अगर आपके 2-3 विजिट्स हो चुके होंगे डिफरेंट सेट ऑफ इवैल्यूएटर्स आएंगे और वो जब सब आपको लेवल 2 दे के जाएंगे तो प्रीटी मच आपका सिस्टम जो है तब तक वो इस छेनी में से गुजर के वो रोबस्ट हो चुका होगा। तो also मेरा ख्याल है कि the proof is in the pudding many times, and मैं जरूर किस जवाब देना चाह रहा हूँ कि वो जब आप इस iterative process से गुजरेंगे तो that is also going to give you confidence कि आप अगर आप कहते हैं कि जी मैं डिफेंड करता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कहता है जी इस्लामियात में होना चाहिए, तो लाइक वी सेड कि जी innovation and technological developments में there is no context of Islamiyat. It does not make any sense here, and you know with time you'll be able to have that confidence to make that sense. Here is one sub. जी
क्योंकि उन्होंने ऑफिस से सीखना है और उसमें कंटिन्यूअसली मैं आपको जवाब देता हूँ सर इसका. अपनी जिंदगी में काम करेंगे किसी भी. So first of all, we recognize that this is a test in an effective domain. First of all, let's agree. The effective domain में कर रहे हैं. So the skill set is not important right now. The attitude is. ठीक है, तो let's have a discussion as academicians कि what are the attributes of a student. So obviously मैं टेस्ट तो नहीं कर सकता, मैं लाइफ लॉन्ग के लेंथ ऑफ लाइफ के एंड पर टेस्ट तो नहीं कर सकता कि इसने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कि नहीं की. I can only look at indicators. So my question to you would be that if you want to map your introduction to computing with P 12, I would ask you what are the markers you are going to look for to identify कि ये student जो है वो lifelong learning skills gain कर रहा है कि नहीं कर रहा. So not the technical skill, but the attitude that is going to contribute to lifelong learning, right? तो मैं आपसे सवाल ऐसे पूछता हूँ कि आपके ख्याल में कि वो क्या skills हैं जो आप देखेंगे आप कहेंगे हाँ ये जो skill है ना इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि he will be able to work independently by virtue of learning as he goes along. And that's where our question है. आपके ख्याल में क्या? Sure. इसी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कोई छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट या कोई इस तरीके का लेके उनकी स्किल्स वहां पे असेस. Sure. देन अब देखिए अब हमारे माइंड में ये है कि अब हमने इसको ऑफिस सिखा दिया है, अगले पूरे डिग्री प्रोग्राम्स में इसको एमएस ऑफिस से वास्ता इसका पड़ता है. Sure. देन लैब रिपोर्ट्स से बनानी है, फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है. वो तो eventually है ना, देखें क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात काट इसलिए रहा हूँ कि आप अभी क्योंकि what he will do eventually is not what you can grade in that course, right? तो आपने उसकी हमने क्या कहता है quantifiable grading के perspective से देखना है. So if I'm doing a course in the first semester right now, and by the end of the course I want to have quantifiable grade, right? Now let's say हमने शुरू में कहा कि let's agree कि if that student shows a spark in being able to work independently, जो हमने एग्री किया कि जी जो चीज़ हमने नहीं सिखाई उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो कहता है कि मैं उसकी बुनियाद पे नई चीज़ें सीख सकता हूँ. अगर आप समझते हैं कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और आप समझते हैं कि मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ तो फॉर श्योर यू कैन डू इट. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं आपको लेट मी ऑफ माय हेड आप वर्ड सिखाते हैं बेसिक, उसके बाद आप कहते हैं कि जी ये न्यूज़ वीक है, इसका कवर पेज और बैक पेज जो है ना वो वर्ड पे रेप्लिकेट कर दो. सो यू हैव नॉट टॉट दैट चाइल्ड एनी अदर स्किल बिसाइड्स द बेसिक्स और वो उसकी बुनियाद पे. And if you believe as somebody who is active in the CQI cycle in the formation of the CLOs, आप कहते हैं कि नहीं I am confident कि मैं इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट को A12 पे टेस्ट कर सकता हूँ, PL12 पे टेस्ट कर सकता हूँ, तो yes for sure, why not? Well, that's my take on it. If you feel that you can justify the testing mechanism कि ये जो टेस्ट है ये is a good indicator of lifelong learning activities, so for sure yes. तो इसमें कतई मतलब नहीं है कि ये आखिरी पीएलओ है तो ये पहले सेमेस्टर में नहीं हो सकती. जी सर मैं वही पहला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं. जैसे आपने पीएलओ 12 है मेजॉरिटी केसेस में अफेक्टिव डोमेन नहीं होगा. आई वुड से सारे केसेस में अफेक्टिव डोमेन नहीं होगा. मेजॉरिटी कोई साथ डिटेल डिस्कस करना जिसमें हमें पता चले कि क्या साइंस कहां से पीएलओ 12 है टीम है ये टेबल आप बना दें लेकिन ऐसे आप बना दें और पब्लिश कर लें इसको. बेनिफिट ये होगा सीलो के अगेंस्ट जब पीएलओ तो आईडिया कोई कट एंड राइट ये नहीं है. जैसा बार-बार मैंने इंसिस्ट किया ना इस चीज पे कि आप यूनिवर्सिटी में विजिट आया है वो आपकी पीयर इवैल्यूएशन है, ठीक है ना. आपका मैकेनिज्म सेल्फ कंसिस्टेंट होना चाहिए. द लास्ट रिस्पांस आई वांट टू हियर इज कि जी ये उन्होंने किया था हमने उनको देख के कर लिया. That is very counterproductive response because you have to give a justification because आप यूनिवर्सिटी हैं आप ठीक है आपने ये किया है जैसे PhD thesis में आप खड़े होकर डिफेंड कर रहे हो अपने काम को, आपको तो साइंटिफिक लॉजिक देनी होती है ना उसके डिफेंस में कि ठीक है और ये बात में पता लगा ये सिस्टम के हम सोच रहे अगले किसी पेपर में एड्रेस करेंगे. द पॉइंट इज के फ्रेमवर्क आपका है, आप यूनिवर्सिटी मैनुअल आपके पास है, ठीक है. यस लेट्स से आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी नस के जो एसोसिएटेड या इदारे हैं उनमें हो भी, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको सेल्फ कंसिस्टेंट बनाना जो है अपने इदारे के लिए वो आपकी जिम्मेदारी है. अगर मैं इसकी रफ एनालिजी दूं तो जब हम यानी PhD में थीसिस लिख रहे होते हैं तो आपको रेफरेंसेस कहीं आपको रेफरेंस मिलता है IEEE एक्सप्लोर से
उसका फॉर्मेट कुछ और है। कहीं आपको रेफरेंस मिलता है गूगल स्कॉलर से, ठीक है, वो किसी और, वो रेफरेंस किसी और फॉर्मेटिंग में, बट वंस यू पुट इट इन योर PhD thesis, it becomes your responsibility to make the format of all the references consistent. एक APA स्टाइल में है, एक शिमा स्टाइल में है रेफरेंस, एक IEEE स्टाइल में है, जहाँ मर्जी से आपने वो कंटेंट दिया, एट द एंड ऑफ द डे आपके जब थीसिस में जा रहा है वो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे रेफरेंसेस को कंसिस्टेंटली एक फॉर्मेट पे लेके आए। तो लेट्स से कि ये पाकिस्तान है, आपने TOT, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट जहाँ से भी TOT हो गई, ये तो सबको पता है पाकिस्तान है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ से भी आपको हेल्प आउट हुए या जिस तरह भी हुआ, एट द एंड ऑफ द डे विजिट आपका आ रहा है, आपने डिफेंड करना है अपने काम को, और आपकी चीज़ें जो है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एंड यू हैव टू हैव a plausible explanation for things, ठीक है ना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ब्रेक कर लें मेरे ख्याल से उसके बाद तो मेरा ख्याल है खत्म कर लेते हैं, फिर कर लें तो फिर एक बार टी ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद कर लें ताकि वो लॉजिकल, विल जस्ट, अगर आप ना समझे तो फिर हम सर मेरा ख्याल है खत्म कर लेते हैं, फिर विल जस्ट फिनिश इट। हाँ, इट्स ओके, it will take me 10 minutes and I'll wrap it up. सर 10:30 11:30 को टारगेट करते हैं, then we'll do, ठीक है चलें। तो PLO सबको याद है, सारे याद है? रिजवान साहब तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, फरहान जी ऑलमोस्ट, सर आपको सारे ज़बानी याद किए। तो we have had some problems with people remembering those PLOs. So what we want to do is we want to have an interactive session with you so that we can internalize the ideas of the PLOs. ठीक है? So this is just to give you an idea with a storytelling technique whereby if you remember the story, hopefully it's going to serve two purposes. एक ये कि आपको PLOs याद रहे, दूसरी बात ये है कि आपको PLO की essence भी थोड़ी याद रहे, ठीक है? तो ये आपके सामने नमल यूनिवर्सिटी है, आई डोंट नो विच ब्लॉक इट इज, तो कोई भी अच्छा सा आपका ब्लॉक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और यहाँ से आपका एक स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट करके निकलता है, राइट? नमल का स्टूडेंट है। आजकल ऑनलाइन पढ़ के बेचारे जो हैं बच्चे बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ उम्मीद करेंगे कि बच्चों को कुछ ना कुछ तो सीखा होगा उन्होंने। वुड यू एग्री? कोई ना कोई नॉलेज तो होगी, बुनियादी नॉलेज, ठीक है? So we would assume that all of these students have some basic engineering knowledge, right? तो आपका ग्रेजुएट है और हम इंसिडेंटली PLO1 जो है वो आपका क्या है? इंजीनियरिंग नॉलेज। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टूडेंट है he should have some engineering knowledge। जब उसके पास इंजीनियरिंग नॉलेज आएगा तो वो होपफुली वो क्रिटिकली चीज़ों को देखेगा और वो देखेगा कि चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जहाँ पे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। तो वो क्या करेगा? प्रॉब्लम्स को देखेगा और इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेगा। जब वो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेगा तो दैट कैपेसिटी coincides with your PLO2 where an outcome of the graduate should be that the student is able to look at, correlate the engineering knowledge, look at, analyze problems so that they can go for solutions, ठीक है? तो जब वो solutions की तरफ जाएगा तो उसने कुछ ना कुछ बनाना होगा, कुछ काम करना होगा, कोई डिजाइन एंड डेवलपमेंट करनी होगी, ठीक है? तो ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो है हमारी क्या चीज हो जाएगी? PLO3, ठीक है? अगर आप गौर करें कि all of these things right now what we are talking about very strongly are closely aligned with technology। जब स्टूडेंट आपका जो अब मार्केट में आ गया है, उसने इंजीनियरिंग नॉलेज भी गेन कर ली है, उसने कुछ ना कुछ देख लिया कि जी मसाइल हैं, उनको एनालाइज कैसे करना है, तज्जिया कैसे करना है, उसकी बुनियाद पे उसने कोई प्रॉब्लम डिज़ाइन, सोल्यूशन डिज़ाइन करना है और सोल्यूशन डेवलप करना है, और ये सारा काम वो खुद कर रहा है, तो आगे उसको एहसास होता है कि और लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो रादर के हर दफ़ा व्हील को री इन्वेंट करे, दी graduate should be able to investigate complex problems and
existing engineering solutions जिनकी बुनियाद पे वो बेहतर solutions दे सके, और it so happens that investigation is our fourth PLO. ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया और होपफुली प्लेजराइज नहीं कर रहा, जो दूसरों का काम देखा है उसको उनको साइटेशन भी दे रहा है और क्रेडिट भी दे रहा है. तो जिस तरह से वो प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स मेकिंग मोर एडवांस्ड थिंग्स, दिस ग्रेजुएट learn develops or is able to leverage his or her ability to use modern tools that he or she has learned during the course of studies. PLO 5. So just for my reminder, वकार के साथ बैठे हैं, sorry I forgot. Wes क्या कहते हैं, what are the first 5 PLOs? Engineering knowledge, analyzing problems, design and development, right? बीच में कोई रह गया? Investigation. So you don't want to, like, say, start developing, but you also should be cognizant of existing solutions that exist. You should be able to see कि जी क्या ये problem पहले solve हुआ है कि नहीं हुआ, और मैं उस knowledge को दोबारा से इस्तेमाल कर सकूं कि नहीं कर सकूं. और ये हमारे primary जो learning outcomes हैं, ये वो हैं जो कि they are very technology centric. और अगर अक्सर आप देखेंगे कि आपकी जो cognitive domain पे सवाल होंगे in engineering, even psychomotor, they're going to be very closely aligned and with these 5 PLOs. So PLO 1 to 5 is going to be very close to, I mean, more often than not, your cognitive domain and your psychomotor domain is going to be in and around PLO 1 to 5. Now, हमारे पास एक अच्छा इंजीनियर बन गया, right? एक बड़ी अच्छी स्किल सेट्स हैं उसके पास. क्या क्या था स्किल सेट? नॉलेज है, आप बताएंगे, सॉरी, स्किल्स हैं, एनालिसिस का, ठीक है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल कर सकता है. वी वांट, हम ये नहीं चाहते कि ये पूरी की पूरी स्किल सेट जो है वो उसके अंदर कंटेन रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि आपका इंजीनियर जो है वो ग्रेजुएट करने के बाद सोसाइटी के साथ इंगेज करे और इस तरह के सॉल्यूशंस लेके आए जो कि सोसाइटी को सर्व करें. अब इसका मतलब ये नहीं कि वो हॉबी इंजीनियर नहीं बन सकता और अपने कमरे में बैठ के अच्छी अच्छी चीजें ना बनाए अपने खुशी के लिए, लेकिन आई एम श्योर दैट you want your graduates to go out in the world and make a difference to the society. So it so happens once again that PLO 6 addresses attributes that have to do with outcomes and abilities that have to do with how an engineer, how your graduate is going to engage with the society. और जब वो सोसाइटी के साथ करे, यानी कि दूसरे लोगों के साथ इंगेज करे, तो हम खाली लोगों तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते. हम चाहते हैं कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में ही शुड बी अवेयर, द ग्रेजुएट शुड बी अवेयर अबाउट सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, अबाउट कार्बन एमिशंस, अबाउट लो पावर सॉल्यूशंस, about reduction of pollution and so on and so forth. We want them to be aware of the requirements of the environment. Obviously, हमारी ज़रूरत भी है, and a lot of work now is moving towards greener direction, greener technologies. And it so happens that if your graduate has an appreciation and understanding of the environment, that corresponds to PLO 7. और हम खाली ये नहीं चाहते कि जी बहुत well-rounded engineer है और उसको लोगों का भी पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं जो मैंने सोसाइटी में सॉल्व करनी है, और उसे एनवायरनमेंट का भी पता है. हमें एक एथिकल इंजीनियर भी चाहिए. सो वी वांट दैट इंजीनियर टू बी एथिकल. जैसे हमने कहा कि किसी का काम जो है वो प्लेजराइज ना करे, किसी का काम चोरी ना करे, और उसके अलावा जनरली भी वी वांट टू प्रोड्यूस, लाइक आई सेड, हम लोग एज टीचर्स मेंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड it's imperative that we instill these qualities कि जिस चीज को unfortunately हमारी सोसाइटी में लोग for granted लेते हैं, अच्छी ethical practices को और professional ethics जिसके बारे में आपको आइडिया होगा, but this is just a mechanism for you to remember all of these PLOs and make sense of how they are organically connected, right? मेरा इंजीनियर अब ethical भी हो गया, ठीक है, सोसाइटी के साथ इंगेज कर रहा है. सॉरी, क्या क्या थे पीछे सोसाइटी के साथ इंगेज कर रहा है. सर आप
उससे पहले क्या था, सॉरी, एनवायरमेंट के एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और उससे पीछे सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के साथ एंगेज कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को कर रहा है, एथिकल भी है, ये तीन चीजें हैं। बाय द वे ये तीन चीजें हम किस पे टेस्ट करेंगे आपके ख्याल में, आप अगर बताएं? इफेक्टिव डोमेन में टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद नॉलेज, एंड अगेन आई कम बैक टू दैट क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि जी हम एथिकल इफेक्टिव डोमेन में कैसे टेस्ट करेंगे। इफ यू फील दैट एनी वन ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स can be in some way shape or form tested, now how is it going to come top down, जो डॉक्टर साहब ने बार बार बात की कि it's going to come top down, तो आप CDF देखते हैं, CDF मैंडेट करती है कि यहाँ पे इफेक्टिव डोमेन पे, ठीक है जी, इस PLO पे आप स्टूडेंट को टेस्ट करें। so you may agree with it, you may not agree with it, right? अगर आप एग्री नहीं करते तो make sure in the CQI cycle that PLO is taken care of. if you agree with it, तो आपने अब पहले डिसाइड करना है कि मैंने ये इफेक्टिव एट्रीब्यूट टेस्ट करना है, उसका मैं मैकेनिज्म क्या करूंगा, और उस मैकेनिज्म को एक्चुअली एम्प्लॉय करने के लिए मैंने क्लास में एक्टिविटी क्या करानी है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड। तो हमारे पास अब एक बहुत अच्छा वेल राउंडेड इंजीनियर है जिसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सोसाइटी के साथ एंगेज कर रहा है, इंट्रोवर्ट नहीं है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहा है, और क्या कर रहा था एनवायरमेंट फ्रेंडली के बाद, एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है। अब वो अकेले भी काम कर रहा है और टीम के साथ भी काम कर रहा है। तो as the engineer is going to grow in terms of work, जिस तरह से उसका काम स्केल करेगा, we believe that the students should have attributes that help the students to be able to work effectively in a team, efficiently and effectively. And it so happens that PLO 9 has to do with teamwork. और अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं और सोसाइटी के साथ एंगेज कर रहे हैं तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि क्या होगी। अगर आप लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं तो you should be able to communicate with team, you should be able to communicate with the society, you should be able to communicate with the clients effectively, and this so happens to be PLO 10. और जिस तरह से इंजीनियर की ग्रोथ होगी वो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैंडल करेगा, नीचे उसके लोग काम करेंगे, दैट इंजीनियर शुड हैव द ग्राइंड, लेट्स से द फाउंडेशन ऑफ being able to manage projects efficiently and professionally, ठीक है। PLO 11 and last but not the least, इसके ऊपर हमने काफी मेरा ख्याल है में तंग करता है कि हमें जैसे पता ही है कि इसके बगैर इंजीनियर का कोई गुजारा नहीं है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम इंश्योर तो नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन सी इज दैट इफ दैट स्टूडेंट डेवलप्स हैबिट्स दैट आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और आजकल स्टूडेंट्स को हम इस चीज पे लेके आते हैं कि जी जाके खुद सर्च करो, खुद तलाश करो, खुद रीड करो। आप में से काफी सारे लोग हैं, आई डोंट नो, बहुत पहले किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 8 साल पहले, हो सकता है 15 साल पहले इंजीनियरिंग की हो, एंड थिंग्स आर चेंजिंग एट अ ब्रेक नेक स्पीड। तो हम लोगों को भी, हम भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, ऑल ऑफ अस, एंड वी ऑल realize and appreciate that we have to keep on learning, and but as an outcome of graduates, हमारे पास जिस तरह से रिजवान साहब सवाल पूछ रहे थे in terms of that example in a first semester, कि I have to have an understanding कि वो कौन से पैमाने हैं जिन पे मैं टेस्ट करूंगा स्टूडेंट को, और फिर मैंने वो टेस्ट कैसे करने हैं। So it has to come top down. So I hope कि now you have an idea of these PLOs and you can sort of have a mental picture of how these PLOs have evolved and moved. और इस पे आप गौर करें कि इवन तो ये पाकिस्तान जो है आपकी इंजीनियरिंग की PEC की तरफ से दी हुई PLOs हैं, इनमें ज़्यादातर हमारी जो ज़्यादातर हमारे जो PLOs हैं वो किस डोमेन में लाई कर रहे हैं, इफेक्टिव डोमेन में लाई कर रहे हैं। तो दिस इज क्वाइट important, and we have to actually, and I think this is my personal comment, कि because assessing, rather evaluating effective domain is not difficult. Planning activities, being mindful कि मैं जो हूँ इन effective domains पे बच्चे को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, असल में really बड़ा आसान ये है कि जी इस चीज की डेफिनेशन लिख दो, ये प्रोग्राम बना दो, इसको एनालाइज करो। बट इट सो हैपेंस कि अमूमी तौर पे मुझे इफेक्टिव डोमेन में बच्चों को टेस्ट करने के लिए आई हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड
exams. I have to have interactive sessions with students. I will have to have some activity-based work with that I can observe. Lekin it has to come from top down. And eventually, like I said before, if you are able to establish these effective attributes in your graduates, eventually it is going to have a lot of value for your graduates. So मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पिक्चर आप लोगों को क्लियर हुई होगी, जिनको थोड़ी बहुत भी ambiguity थी in terms of the PLOs. मुजफ्फर साहब PLOs बताएंगे, दोबारा बता दें अगर, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मेरी आउटकम इस वर्कशॉप की जबरदस्त, जबरदस्त, इन्वेस्टिगेटिंग एग्जिस्टिंग, ठीक है, कोई हेल्प हो रही सर, चीटिंग हो रही है हम पे सर, आजकल इन्विजिलेशन करके मोटे में हमारा आवाज आती है फॉरन। इंजीनियर एंड सोसाइटी, जबरदस्त सर, टीम वर्क, आई डोंट नो, आप बताएं सर, आप बताएं जवाब साहब, आगे एनवायरनमेंट, आगे एनवायरनमेंट की बात क्या था जी सर, एथिक्स, टीम वर्क, जबरदस्त, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। तो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव अ गुड appreciation of the PLOs. I'll now because we've already have had a lot of discussion on the CLO, मैं बड़ी जल्दी से इसको CLO की डिस्कशन को रैप अप करूंगा, ठीक है। तो CLO जो है वो अब तक मेरा ख्याल है डिस्कशन में क्लियर हो चुका है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड आउटकम इन अ कोर्स है वो उसको कन्वे करती है, ठीक है। एंड इट शुड बी described comprehensively by a set of well formulated CLOs, and I think I have a feeling that CLOs should have more detail in them. और इसमें इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जिस तरह एक लेजी होता है, अक्सर लोग काम करते हैं कि जी किताब में हम पहले चैप्टर पढ़ाया करते थे 1 2 3 4 5 6, तो बाद में जब हमने CLO बनाना थी तो हमने इसी तरह से CLO बना ली। You should always in the design and development of your CLOs should be cognizant of कि ये किस डोमेन में लाई करती है, कॉग्निटिव में है, इफेक्टिव में, साइकोमोटर में, और किस लेवल पे लाई करती है। एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द CQI साइकिल, जिसके अंदर आपकी CLOs ओवर टाइम जो है वो मैच्योर होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन ये एड्रेस हो चुका है इस डिस्कशन में, कि एवरी CLO मस्ट कंट्रीब्यूट टू 1 PLO ओनली। तो एक CLO जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं एट द सेम टाइम इफेक्टिव डोमेन में से PLO 12 को भी एड्रेस कर रहा हूं और PLO 5 को भी एड्रेस कर रहा हूं। इसका कतन ये मतलब ये नहीं है कि एक एक्टिविटी जो है वो 2 PLOs पे नहीं हो सकती। तो दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एक एक्टिविटी जो है वो 2 PLOs पे हो सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा CLOs उस पर टेस्ट हो रहे होंगे। मेरी असेसमेंट, मेरी जो इवैल्यूएशन है, उसमें एक इवैल्यूएशन एक्टिविटी होगी जो CLO X पे होगी, जो PLO 5 के साथ है, और दूसरी असेसमेंट एक्टिविटी मेरी CLO Y के साथ होगी जो कि PLO 12 के साथ मेरा मैप कर रहा है। तो एन आउटकम कैन बी टेस्टेड ऑन मल्टीपल डोमेन्स, लेकिन ए CLO कैन नॉट बी मैप टू 2 PLOs। हाँ, दूसरी पिक्चर हो सकती है, आपके पास मल्टीपल CLOs हो सकते हैं। और इस पे आपका एक और सवाल था, लेवल का किसी ने पूछा था कि इफेक्टिव डोमेन में किस लेवल पे। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं एक कोर्स हो जिसमें सारे के सारे CLOs एक ही PLO पे हों आर्ग्यूबली, और आप कहें कि जी सारे के सारे PLO 12 पे हैं, if you can visualize it, या PLO 12 ना हो, let's say कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, that's a pretty robust topic in its own right, ठीक है। तो PLO 12 के ऊपर है और मैं टेस्ट कर रहा हूं, एंड मे बी आई एम टेस्टिंग एट A1, एक CLO मेरा A1 पे लाई कर रहा है, दूसरा A2 पे लाई कर रहा है, तीसरा A3 पे, चौथा A4 पे, but there all of those CLOs are mapping on PLO 11, ठीक है। तो I hope that addresses some of the misconceptions or confusions people have in this regard. जी, most of the CLOs will be mapped to the PLO 1. अब वो ये वाली बात है जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल शुरू में की थी, कि जब आप टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं
तो एक लेवल देखिए प्रोग्रेसिवली स्टूडेंट ग्रो कर रहा है एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सम नॉलेज, तो आप हर चीज को so वो उसकी ability to do the activity may be based on the knowledge, but are you testing cognition or not? Do you understand my point? And are you testing knowledge itself or not? मिसाल के तौर पे knowledge में क्या होगा कि let's say अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब करवा रहे हैं तो नॉलेज क्या होगी कि मैं इसके सामने डायोड रख देता हूँ या डायोड की तस्वीर बनाता हूँ, सब कहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो दैट वुड बी यस समथिंग व्हिच हैज टू डू विद इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है. लेकिन डज दैट सो अगर मैं कोई काम उससे करवाता हूँ, मैं डायोड से उसको काम करवाता हूँ, दैट लेट्स से क्वालिफाइज एज अ मॉडर्न टूल यूजेज लेट्स से, तो वुड ही हैव नॉलेज of the component? Yes, he would have knowledge of the components, but would I map that activity on engineering knowledge? I will not. Okay, so you have to think of it in terms of how you and what you are assessing the student for. So you can test them for knowledge. Yes, those things are going to be associated with knowledge. ठीक है, तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और अगेन मैं आपको यही बताऊं कि ये भी दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और होता क्या है कि अक्सर जो CDFs में CLOs होती है उनमें ये क्लैरिटी नहीं होती, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. स्पेशली थिंक अबाउट इफेक्टिव डोमेन. अगर आप एक एक्टिविटी करवा रहे हैं जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं है या मेजरेबल नहीं है, तो वो ग्रेडेबल भी नहीं है. मैं किस बुनियाद पे ग्रेड करूंगा? अगर ग्रेडेबल नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन योर डॉक्यूमेंटेशन. इफ इट्स नॉट कमिंग इन योर डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज नॉट एन आउटकम. इट मे बी एन आउटकम. देखें, कई बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि above and beyond their duties they are doing things that may qualify as mentoring and that may fall into effective domain, i.e. that is building the character of the student. लेकिन वो कहीं पे भी हम देख नहीं सकते. यानी कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़े डिप्रेस होते हैं तो वो जाके उनकी इस पे मेंटरिंग करते हैं, हेल्प करते हैं. इज दैट बिल्डिंग कैरेक्टर? यस. इज दैट एन इफेक्टिव आउटकम? फॉर श्योर. क्या उसकी ट्रांसक्रिप्ट पे ये कहीं लिखा आएगा कि उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में ये एलिमेंट एड्रेस किया? अच्छा, ये दोनों के साथ जाती है बाय द वे. अब गौर करें कि ये जो है ना, इसमें जो जो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो वेल राउंडेड टीचर्स हैं, जो कि बहुत सारे डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं, जब आप OBE की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो उनका भी फायदा हो रहा है. अगर मैं देखता हूं और मैं देखता हूं कि आपने जो काम किया है दैट इज वेरी वेल थॉट आउट, it is also like a positive statement about you as a faculty member and me as a faculty member. ठीक, तो course learning outcomes should be measurable and observable, और क्योंकि हम ये Bloom's taxonomy को follow कर रहे हैं, तो they should be measurable and observable within the cognitive, psychomotor and the affective domain. और मैं इसको बस round up करता हूँ with this thing कि हमारा जो complete cycle है, क्योंकि इदारा जो है वो विजन और मिशन की बुनियाद पे चल रहा है, उसका एक विजन है. So the institute needs to ensure that all individual CLOs have been achieved by the students. If they are achieved during the course of a degree, then all the PLOs will have been achieved. ये आपका काम है कि आप मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसा ना हो कि पता लगे कि सारे कोर्स आपने CDFs डिजाइन कर ली है और पता लगा कि एक PLO जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में मैप नहीं हुआ. So that can be problematic. और consequently अगर PLOs अचीव हो रहे हैं जो हमारे हाथ में है, so the assumption is that that is going to lead to the achievement of the PEOs and the program mission is going to be accomplished. Okay, so this is all that I will talk about in terms of CLOs. There are a few examples. If you want to look at them, we can look at those examples, or we can conclude the lecture here, the discussion here, excuse me, and have a question and answer session if you still have any questions. Sure. So let's have a discussion session after the. खत्म कर लिया बस. हाँ जी. हाँ जी, we have already